मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो हर चीज पकड़नी है, हर वैल्यू एरिया क्या है, नैस्डैक का एरिया क्या है। So, अब ओसीओ का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं 3 साल नहीं बोला ही नहीं, क्योंकि रेयरली एनीबडी यूजेस इट, लेकिन वो अब बोलना पड़ेगा ना, इट्स इट्स गुड टू नो, बट लेकिन एंड में ये ना हो कि आप लोग मास्टर ऑफ, वो क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन तो बने होंगे। आता तो सब कुछ है, लेकिन पे आउट्स नहीं आ रहे। और कुछ लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग अच्छे ट्रेनर होते हैं, इट्स नो डाउट, नो। हाँ, अब ये एक मिड बैंड ले गया, ये गैप ट्रेड था, नीचे बीबीस को नहीं टच किया उसने, तो कंसिडर्ड अ गैप ट्रेड। All right. Raise it up slightly. Okay, let's see what market has done. Last night I slept early, I didn't get to see. I think it did touch evening areas. I don't know if we're gonna have areas or not. We'll find out. अभी areas नहीं update हुए. I think he just didn't do the. I think he's updating it. Let me fix it right now. One thing. 57. That is the unemployment claims. It's fixed in red. That means Meaning number कम है पिछले से, तो market ऊपर technically ऊपर जान. Yeah, he's updating the areas. I mean, right now I can see live numbers changing on super areas. So give it about an hour. Not a while. 15 minutes, sorry. So I think base is down, pressure is up. साढ़े 9 के बाद ट्रू बन जाता है कि नाइट में क्या हुआ, पॉसिबल. अगर वो तो कल रात का जो नंबर है, ये जो नंबर है ना आपके वैल्यू एरिया के, ये आज हम यूज कर सकते हैं टू फिगर आउट यस्टरडे का वॉल्यूम. एक सेकंड, होती है जनरल. Yes, yes. So
Okay, let's take a look. 220050. All right, good morning, everybody. Thursday, March 20th, 9:04 a.m. Eastern. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you guys are joining us at superareas.com. Thursday, let's look at Nasdaq, how high it went, because Nasdaq decides the future of. So Nasdaq last night, the high was 20. Let's do 20,100, very close to that. 20,100. Let's do Nasdaq low 19,735. So whole night market moved 360 points. What was our evening areas that got updated? 20,300 didn't go there. What was our high for ES? ES 70, 60 didn't go there. 56.82. But it did touch our night session low. Wow. If anybody had that place done, we made good money. So somebody who was watching night session low, they didn't need to be here. They're already done for the day. Because the night session low, evening areas was 56.80 and we got hit 82. So computer predicted, अगर आपके evening area होते, आपने खोल के देखे, मैं अभी देख रहा हूँ कल के. Computer ने predict किया 5680 to 5690. So if you took 80, 90, and it shot up from there though. So that was pretty good. So वो तो 8 बजे आ जाते हैं ना, 8-9 बजे आ जाते हैं. सुबह 7 बजे लगे हैं ये एरिया. तो लेकिन आप अपना एटीएम लगा के रखें, ओसीओ लगा के रखें, मींस के अगर आ गए स्टॉप आप करते हैं ना जिस तरह. So that was your evening areas. All right, so we will see which way things go, and I will double check these values shortly as soon as the areas get updated. Base is down, pressure is down. And the evening areas, remember, you're trading the same contract, guys, as the morning areas. No difference in that whatsoever. So right now, base is down, pressure is down for ESN and 20,000. So 19,800. So 100%. देखिए वो हाँ वही चलता है रूल, लेकिन 30-20 का मिड बैंड लें. 15-10 बहुत तेज चलता है. वो बिल्कुल. अब आपका एक और मिड बैंड टच नहीं हुआ, लेकिन इवन ब्रेकआउट में भी उसने एक्सटेंडेड नहीं दिया. There you go. Areas have been updated. If you guys disconnect, reconnect your connection, it will reload the latest areas on your charts. Let's see. Base is down, pressure is down. Correct. Let's see.
ये ठीक है सर, Okay, focus on points. focus on positive trades. Money is the result of positive trades. Yeah. हर बंदा $50 देख के बंद कर देते हैं और 250-300 लॉस लेके बैठे रहते हैं. ये अब psychology है, it's a hard one to overcome. See, what I tell everyone is वो डॉलर फिगर की जगह ना पॉइंट्स पे रखो या टिक्स पे रखो. जब मैं पोजीशन ट्रेडिंग करता था ना, ऑनेस्टली ट्रेड डाल के आप भूल जाते हो कि ट्रेड डाला हुआ है, एक अच्छा एरिया आया हुआ है, जैसे एक्सपेक्टेड हाई है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड हाई से R1 पे जाना है फॉर एग्जांपल, या इवन एक्सपेक्टेड हाई से नीचे गिरना है R1 की तरफ, और या एक्सपेक्टेड लो से चढ़ना है S1 की तरफ. अब आपको पता है ये 50 पॉइंट है, लेकिन होता ये था कि आपने 200 देखे, होता है यार यहीं ले लें, राइट. लेकिन वो पहले 200 जाता है, फिर -300 जाता है, फिर वो 400 जाता है, फिर -50 जाता है, वो लोअर लो स्लोली लगाता है, और फिर एक दफा मोमेंटम उठा ले तो क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ऑनेस्टली एवरीबडी इज इन देयर फॉर स्कैल्पिंग. Majority of the users go in, they take their $100 or $200 or $50 and they want to get out, right? Issue is that either you work with मैं define करता हूं कि मैं एक पोजीशन ट्रेडर नहीं हूं. पोजीशन ट्रेडर बहुत लंबे ट्रेड होल्ड करता है, हम लोग एक डे ट्रेडर हैं. आपका 2 का टारगेट है तो आप 2 लेके फिर बंद करो ना. होता ये है कि टारगेट 2 का है, चलो एक और अगला मिड बैंड भी ले लेते हैं, तो आपने पहले में से 50 लिया होता है, दूसरे में से 50, 100 पूरा हो गया. अब अगला मिड बैंड 6 पॉइंट ले जाता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. तो या तो आप 2 डिसिप्लिन रखें ना कि यू आर डन आफ्टर 2, सो राइट, it's a but right now it's a double divergence. Everything is lower low. It did not touch the mid band this time. It did. This time it did touch. But let's say what happens in about 10-15 minutes. Sorry, and the whole idea is eventually I keep telling users who joined 10 years ago, or if you guys just joined, what will happen eventually is you will either quit due to lack of discipline, or or make it. Only 3% make it. This is the truth. Doesn't matter what kind of software you have. So if you are not going to get disciplined, this is a hard industry to be in because of self-regulation. Touched another mid-band here. So the price is opening below S1 into S2. So the ES is opening below S1 towards S2. So look, our value area is standing where? It's approximately standing at the bottom of very close to our value area soon. 56.90. 90 का zone है ना? 86. Yeah, आप 60 minutes से निकाल रहे हैं ना? Yes, good. So exactly. So where am I looking for Nasdaq? Nasdaq, I would like to take expected low. If it S2 could still become a, what's the number for S2? 1 second. So 19,000. 680 to 683. Yes. So if the candle, what's the difference in price of 819 minus 730? 90 points, too close. Expected low, Ji. Because this could open up a 1 hour candle and then, so Nasdaq expected low, please. As close to maybe 600 range. Yeah. So wait for Nasdaq to go to expected low. And what is upper limit if it shoots to the upside? R1 is okay. At this point, Nasdaq R1 and S3. I'm skipping S1, S2. Too fast. One momentum can change quickly.
And we are opening at S2 for almost close to S2. So ES, I will wait for S2. That's very close to night session low as well. So थोड़ा सा दूर है अभी तो ऑलमोस्ट 80 पे है ना आपका यहाँ से अगर S2 चली गई कितने पॉइंट अभी S2 तुम्हारा है 83 पे 82 पे तो ये मतलब अभी कहाँ पे है मार्केट अभी 98 पे है ना 83 और 98 मतलब आप समझ लो हाँ 20 पॉइंट है 20 पॉइंट है नहीं आप जो कह रहे थे S2 की वेट करोगे तो वहां से तुम बाय करेंगे तो भी सेल के लग रहा है फायदा ना नहीं लेकिन हम सेल ट्रेंड के साथ जाएंगे ना So अभी 30-20 mid band is being tested right now. Yes. This is so. Let's see what happens next. And again, we don't want to go through the last time, and so there you go. Let's stretch ourselves for 10 seconds and just repeat the. So नजर नहीं अभी मत भेजो I know it's a bit annoying, but it is what it is. All right, I bear witness to myself that today I bear witness to myself that today I will check the news. I'll check the news I'll place my stop loss. I place my stop loss I'll follow my strategy and not trade randomly. I will follow my strategy and not trade randomly I will treat today as my first trading day. I will treat today as my first trading day I will stay disciplined and not gamble. I will stay disciplined and not gamble And I'll do what I see, not what I think. I'll do what I see and not what I think. There you go. That's it. Takes 15 seconds and now your brain is trained to see even in this mid band kind of gave us that 5 points. So SRE का बन रहा है ना अभी नहीं बना बनने वाला है HL आ रहा है एक सही असल में मैं जो है ना पीछे इतनी ज्यादा ब्लैक कैंडल्स आई हैं कि वो 15-10 में अच्छा ये भी अभी कंसोलिडेशन चल रही है ओके वहाँ से YouTube जी OCO है ना लेटेस्ट YouTube में OCO है ना लेटेस्ट latest YouTube is the OCO link. One is like trying to test the midband again, right? I'm just amazed. This price was exactly 100 points from here last night, 57.70, and we were like, "My God! Finally, it has a direction to go up, but doesn't look like it." S2 को तो दो बार टच करके ऊपर जाता Last time it touched S2 was 7 a.m. So within between 7 to 8, 6 to 7 hour or 7 to 8 hour. Let's see if stocks are in red today or green when they open. Right now, pre-market, everything is showing red. So like Tesla is showing red. That's why you see this, but it could change the moment. So this SRE setup got made, it was created
At 8:48, before I got here, you had a blue, black candle to the downside. And from that SRE setup, you got almost, this is that continuing. So you took 5 points? You got here. That's the perfect. So now this is a swing, and let's see where the retrace happens. No problem. Every single day we do same thing, nothing changes. So just to update, Perdia is taking about 10 days to move you into live. That's the latest I got from them. I just submitted my documents. So after 3,000. So after 3,000, yesterday I sent in the documents. Are they coming up with the sale? Hopefully. I think they have a sale coming now. Is it Easter Mondays? No. When Good Friday? No. What's the next big event? Good Friday. Good Friday. So that's, I think, where sales are gonna start happening. Now, अभी भी 749 का ही है. अभी 749 बहुत steep बन जाता है यार मेरे ख्याल से. Good Friday is waiting. So next big holiday is Good Friday. So it means very soon they will do this. So don't purchase at the high price right now, Perdia, please. So मैं ट्रेडिंग पता किस तरह देखता हूँ पर्सनली 4 साल के बाद आई डोंट गेट एक्साइटेड आई डोंट जब अच्छा सेटअप आ गया वहाँ मेरी जो न्यूरॉन्स है ना वो ब्लास्ट हो रही होती हैं स्पेशली कल शाम 3 बजे आप देखते हैं मैं वो सिर्फ ना जल्दी निकल आया और मैं कह रहा था यार मैंने एक्सपेक्टेड हाई लिया और मेरा स्टॉप लॉस नहीं था क्योंकि 109 पॉइंट सॉरी लेट मी रिपीट दैट इन इंग्लिश लास्ट नाइट अराउंड 3 p.m. I saw expected high. I took it. So I took it not at exactly 50, slightly above, and then I waited. No problem. It came. But when the SRE setup came right below R3, right below, you know, I was like, man, why didn't I wait? Like that setup alone could have given me $1,000. I took 200, got out, right? So I get excited when I see a setup near R3 or S3. So if you want the most chunk of money, it will come in ES near those zones. Because then you are not, you know, market has got, like, look at the number for today. Like, it has to retrace sometime. And so R3, let's say if the price today goes to 57.95, for example. Yes. By the way, that mid-band on 3020 did work. I don't know if it touched, but that was called. So this trade, out of those 14 trades, it's called the retracement divergence. There's a word for it. Okay. So if you look at what happened in this candle on 3020, look, price went up to the mid-band. Any of your BBs moved? No. Any of your strength moved? Nothing. So price moved up to the mid-band.
But so it's a gap trade and retracement divergence. That's the official word for it. That I went on top of the bar and then I came down, but none of my moving averages even blinked, right? So that's one of those 14 methods that I believe your mid-band would have been at 5,700 and it went down to from 5,699. Now, nothing you can do, but let's see how strong S2 is. Again, it's testing S2 after an hour or so. So almost after 2 hours, 7 o'clock candle. MES अभी तो lower of those पे जाएगी ना बार Yes. So, value but why, even though an interest rate wasn't, but why is it dropping though? What is it So causing? China has levied 100% tax on Canada. Canada, on baby? canola oil. Wow. That's because Canada has put a lot of charges on China for vehicles, the electric vehicles. Like BYD may be the main thing. Because I don't think we have BYD here yet, right? It's the biggest. So China has a lot of good vehicles, electric vehicles. Yes. And UA they is charge- taking them and Canada is not, right? Yeah. So So Canada, they're not allowing Chinese vehicles. For $35,000, they're like S-Class. wow. $35,000 electric. How long do they last? I always. Well, 5 साल भी चल रहे हैं, बहुत बड़ी और 5 years. Disposable car. Yeah, disposable car. See, they will not have any value after you take them out from the showroom, but they're affordable. See, $35,000, $20,000 electric cars. 5-7 साल में चल जाए तो You don't know? रेंट पे लोगे तब भी तो कितना पड़ता है I'd rather lease it. And I wish there was a better way for me to tell you guys R3 is here. So ये S2 वैलिड तो नहीं होगा क्योंकि that's what S2 वैसे areas अब आए हैं, तो S2 अब बना है. So S2 could still work as a good support. but वो touch तो हुआ वैसे हाँ, वो पहले हुआ है ना, areas से पहले हुआ है. Okay. तो 6.5 live is okay, everything is fine. Zoom is fine, users are connected. Still going down. So 2 more minutes, let's see. Base is down, pressure is down, remember, for today. night session low or S2 be same? Same. So today night session is falling inside S2. So that's what I'm saying. Value is slightly up,
but let's see which way it bounces from now. Does it go to 86 and bounces up, or wants to go and test S2? Because Nasdaq can just have a free fall and go to, Nasdaq is one right now. Both are synced. I look at, because Nasdaq from S2 you only have, there you go, market is. So please don't go against the trend. So 19,785 to 19,734. That's 51 points divided by, let's say, 7, 8 points from here. Yes, both are very much synced. And we're heading into S2. Yeah, 9:30. We got some pumped coming in. So we are in S2 very soon. There you go, black candle. $84. Mid-band is testing. Let's see if mid-band is powerful or not. No. So our area is missed by a point. It's okay, no problem. We didn't take that trade. I think it will go and try to test S2 one more time because right now it's in a retrace. Let's see. Maybe from Fibonacci red box it will do a retrace, but I missed it. I was standing somewhere night session 82. Didn't take mine. Let's see one more time. Does it go down? लेकिन मैं S2 पर मिस हो गया. आपने ले ली? मैंने नहीं. Good. I couldn't take it. So now we are inside that fib retracement zone. Let's see. Would it retrace from here approximately?
No, no retracement yet. How long will it take you to get the horizontal retracement? And with the circuit, if I don't change the rollers and stuff like that, we're talking about almost close to 450, right? Okay, and that will be perfect, right? Good morning, जी. Morning, sir. क्या हाल चाल है? No, still wants to go up. If it breaks 57.11, then it will be considered a swing now because it will make a higher high. मेरी पिछला हाई जो है ना, हाँ तो मेरा 11 है MES पे, तो 11 पे अगर yeah, so the previous dotted line is your, because right now we are still in a retrace, so swing retrace, so it's Because it's less than the previous. exactly, so that's why still is in retrace. Will there be some change on the app or the app should remain the same? When will it become like approximate, you know? What is this thing that you let me know? I will see if I can take like a time off and I can get fixed. And in case you get to the level of Having hard time breaking previous high. Let's see if it goes and respects this mid-band. So what I can do, we decide about that one at that time. And please take all the margins because you want to Yep, 2 points. Huh? Missed by a tick? It's okay. No problem. Hopefully 30-20 will make a higher low. That's what we are trying to see on a 30-20. But right now, but it 15-10 did touch the mid-band. First retracement. Let's see if there's a breakout first on 15-10. That dotted line is that breakout trade. It's 5607. Yes. So right now I have two orders sitting, 5705, my MES minus 4.75, and I have the breakout trade ready. Let's see which one gets picked up. Because mid-band I did not take.
So 5705 minus 4.5, that is for buying or selling? That would be selling. That would be a sell stop because it is blue, black. So I'm hoping it will not go up and it will give me a candle to the downside, longer one. Because 30-20, or if it breaks the previous high, that is my buy stop. Because if you didn't take a mid band, these are the 3 orders ready. So now my sell stop has changed because my black candle position has changed. Is this still a breakout trade? But yeah, breakout is still has possibility, but it has to break previous high, right? Yeah. So let's see if it breaks. So if it breaks, it's very close, but 5706 minus 4.75. Problem is it's falling above the midline, so I'm not too comfortable because it could touch the midband and if generally the black candle falls below the midline, faster. But because right now, if you take a black candle, it could still touch the midband and go back up, right? So I want to make sure that it falls below the midline for my SRES trade. And more I see is the green candle on 60-minute. Nasdaq is green as well. Nasdaq could get to S1, but so my breakout trade could technically work. So S2, I'm calling it done because we came so close and now let's see. Price right now stuck. It made a double top. So need to go 1 tick higher to make a higher high. For me, MES, sorry. MES, it was a double top. There you go. Breakout worked. And I got my point out of it. Done. So breakout gave you a point. There you go. Higher high it made on both charts officially now. Now we are heading towards S1 from the bottom. So right now it's testing the 60-minute midband on Nasdaq, which is close to magic. $30.20 is quite a bit overbought. Let's see if it needs a retracement yet. Because it's 98.87%.
I took that mid-band, by the way. 30-20 mid-band I took. And I'm trailing right now. On the upside. और ऊपर की तरफ सर ग्रीन है दोनों ग्रीन है and I'm trailing with 5 micros. Even if you took a 15-10 mid-band, it didn't kill you because it went to 8.25. 8.5 is over. So 30-20 mid-band worked because that's I just had said it needs a bit of a retrace. It was gone so high. 15-10, I took the mid-band, but it just took me out. नहीं क्योंकि देखिए mid-band का एक rule है. You can stay inside the trade until 8.5. What was the number that came down? What's written there? 7. It's written as 8. Until 2 more ticks. So if you watch my video that's on super areas, it tells you how far you can stay in that trade. So like the kind of stop loss. Stop loss. I So think I had the stop loss at 8, I believe. no, you got to keep it. 8 is too tight. 8 is 10. 12, 10 to 12. So I have it on 20 because what I do is I take the higher high number and subtract 8.5 into it. That's my entry. There you go. We have a divergence on 30-20. Keep an eye on that. 30-20 has a divergence. It made another higher high, but let's see. But that mid-band gave me a few points going up. Nasdaq wants to push up. Nasdaq is inside S1, guys. And it touched S1 and beautiful coming down. मैंने तो कोई ट्रेड ही नहीं लगाया कोई buy stop sell stop हुआ होगा तो मैं तो ट्रेड लगाया ही नहीं मैं तो ट्रेड लगाया ही नहीं अभी वो अपने आप पे ऑटोमेटिकली लॉस में लेके चला गया Okay. Nasdaq पे मैं तो खाली देख रहा हूँ नहीं Nasdaq पे कहीं ना कहीं बटन आपका क्लिक हो गया This time missed mid-band. $30-20 still is in a divergence mode. Remember that. Trump speaks at 10:40 a.m. Oh, I don't know what is he gonna say. Man, it's annoying. Every time he speaks, we are ready for. Nasdaq touched R1 and came down. I don't know if anybody took. My bad. S1 came from bottom, so touched the S1. So S1 is done for Nasdaq. S2 is almost close to done. Because our S1 acted as a resistance. अब फुल एनक्यू पे गलती से क्लिक हुआ फुल वाले पे या अच्छा बड़ा $20 वाला लॉट मतलब my cursor was there right वो क्या तो क्या मेरे को तो समझ में नहीं आया तो क्लिक ही नहीं किया वो that 15-10 still gave you some points 15-10 mid-band green price wants to go down but let's see. Does it make sense to pick up the trade at mid-band? But it's already done. It's already came and went.
And we still have a chance at the breakout. Breakout, yes, possible. Even if you want to take a breakout, you can take that next trade. But let's see. Nasdaq में New York session. All right. Price is kind of stuck now after climbing quite a bit for Nasdaq, all the way from S2 to S1. Nasdaq is back into S1 zone. Let's see if it penetrates it. Very, very powerful. Breakout trade शायद आपको एक point दे दे. Let's see. Pressure is building up. Did it give you guys a point at least? No? From 2 ticks. Still, we haven't yet. There's a break-even opportunity, but it's up to you guys. Still green, everything is, it's just Nasdaq has 30-20 turning this way. ये 30 Nasdaq का जो candles है ना इस side पे बननी शुरू हो गई. And breakout trade is done. Generally, breakout will give you a point though. So I could say on radio we were done at 9:52 a.m. with 2 points. Right? So घबराते क्यों हैं? It's okay. क्या होगा? Stop loss it is. Stress नहीं लेनी. सेहत खराब होगी. मैं mid band again. मुझे 30-20 की divergence थोड़ी बादल आ गई line divergence की line आ गई. So that line is telling you I'm not safe anymore. You can take it, but it's up to you. Now the probability has gone down to maybe 60%. I've seen 15-10 divergence failed hundreds of times, but 30-20 divergence is there. It's just if more time passes. So mid-band trade we should avoid at the divergence, right? You can 15-10. It's still look. It still touched it. Kind of went back up again and another breakout, right? Because Nasdaq is trying to break S1 on that side. So let's see. Yes, S1. ES is inside. Where right now? ES is inside. Yeah, ES is S1 is lots to go before we look at something else. Because S1 is big gap from 83 to 27. It was. Now truly only depends on Nasdaq. Will Nasdaq break S1? Then we will get into S1 for ES. Nasdaq is having a hard time breaking. And the high it went today is 19,932.
So the divergence was at the previous high, right? Yeah, so previous higher high and the current high, the strength didn't go up. Price went up, but the strength didn't go up. So that's why the word divergence comes when, if you look at, So we could technically still have a mid-band. yeah, you can still have a mid-band. It's just if the divergence comes too fast on 30-20, those mid-bands are slightly riskier. So right now it would be risky. 30-20 still, look at 30-20. Look at previous number is 57.13. 30-20. Okay. Current number is higher high 57.20, right? But look at the strength at the bottom. Price went up, but the blue and the red lines, that strength is not going up. The strength of the whole thing, so that is, yeah, at the bottom, where one is at 76%, one is at 80 at the bottom, the third panel, right? So price versus strength, they're not together. So that's a possibility that I may go down, may. Okay. So then Not 100%, but so you can avoid a mid band that has a divergence inside. The longer it remains, the lesser strong it gets weak. अभी तो वहीं पर जो है ना, it's having, because Nasdaq is trying to break S1. हमारा value लेके ऊपर चली गई है. Yes. It's right now at the value area very much. So 57. Yeah, it should now at least give us some retrace back to down from value area, but not yet. Because Nasdaq has gone up 12. So ये S1 valid है. S1 ठीक है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट होगी 9:30 के बाद. It all depends right now on your Nasdaq. Nasdaq area S1 hit, came down, and it's trying to break it a couple of times. But at 10 o'clock candle, maybe it will break and go to R1. So 3 minutes to go for the 10 o'clock candle. So this needs to exit here. So around this time, we could technically wait for the 10 o'clock news and then. If there's any news, 10:40 Trump is going to speak, and you have existing home sales, which is medium impact. So that's coming at 10 o'clock, 1 minute, 44 seconds. So you can trade this. It's not red news in majority, but let's see the impact. So and now there is strength as well. Yes, now strength has caught up, right? So divergence on 30-20 is kind of gone. Yeah, so we could actually pick up the mid-band. Correct. But right now only S1 is coming. So it came from S2 all the way to S1. So S1 should act as a resistance first, because we are very close to, like, maybe 4 points close, and it will get inside S1. And there you go. We are almost in S1 in about a minute. तो वहाँ से एक वहाँ से सेल बनता है टेक्निकली आपका. 27 to 28. If the computer is saying from 27 to 30, I should give you a few points. Will it? Who knows? 26 अगर पहुंच गया. Yeah, आ गया almost. Shot exactly from S2 all the way up to 20 plus 20, 40 points. 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 40 points.
So anytime news, guys, 22 seconds. Let's see the impact. It is medium, so we could see some. So they're expecting 3.95 million sales. Let's see if it's better than previous or. All right, pending sales. Let's see. It shot up slightly. We are inside the area of S1. So existing home sales are green. What's the green to go? And leading index is negative. So still 30-20 is again super overbought. It broke S1 as well. Yeah, news was good news. And the 10 o'clock candle shot up and broke S1. You think it will go? No, R1. Now it's heading R1, towards sorry. R1. So yeah, do you think it will go all the way? Oh, yeah, it can go, of course. Nasdaq is pumping like that news impact. Look at that news impact. Look at that news impact, guys. Didn't respect S1, so because of the news. And it's still climbing. No, it's kind of stuck again. Yep. This is what I hate, like, the waiting game. Didn't respect us. So Rafi, like, I know, like, it's a tough question. When it's kind of stuck like this, Mhm. just waiting. Yeah, wait for because if it's green, you want to buy, right? But from it has to give you a mid band to go up. Otherwise, it's not stopping whatsoever. Otherwise, your stop losses will eat up your account, right? You can't just let it. So 19,756 all the way. To 19,990. Because Nasdaq is not stopping. It's shot from एरिया और न्यूज इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर आ गए और न्यूज आई और एरिया और न्यूज एक दूसरे के अभी पहले नहीं पहले लोअर हाई आना चाहिए अभी तो हायर हाई हायर लो आना है इसका ये अभी स्विंग बनी हुई है और स्विंग ही नहीं रुक रही नैस्डैक 20,000 पे निकल गई है वो because Facebook is pushing it up. Facebook went up $15 right now. So R1 sir, अगला एरिया R1 ही है. Then You think it will break R1?
It should give us some break. It's non-stop one way up, so it needs a bit of a retrace. Let's see if this is a retrace. Nasdaq आपका रुख अभी भी नहीं ऊपर से थोड़ी कैंडल रिट्रेस तो ले रही है. Yeah, retracing. So touching mid-band here first. First stop is at the mid-band. Because ES needs a bit of a reach, like breathing for 30-20. Perfectly, even though both like a background is all green, but it's taking a retrace. So that means like market should be coming down. Yeah, no, it should come down, test mid-bands. Right now, 15-10 is testing mid-band. Next is 30-20 has to test the mid-band. So this one, 30-20 makes more sense, right? Yeah, because look at 30-20 strength is 99.81 overbought. Exactly. It just went straight up without giving us this. But look, 15-10 mid-band worked. They kind of gave you 2 points right there. It means it still wants to go up more. There you go. Your 2 points on 15-10 mid-band again. Even though 30-20 is oversold, first attempt is 15-10 mid-band. If that fails, next support is your 30-20 mid-band. यहाँ पर lower high आ गया, तो हमारे chances हैं कि price should start to go down. So again, the rule is same. You're at a mid-band, either at a breakout now or a lower high now. The Nasdaq will get to R1 if this candle continues to be green. Let's see. There you go. That mid-band worked. Now we have a first lower high. Will it be a black candle to the downside or another breakout? Nope. Another so far looks like wants to climb up. It's like testing the same thing again. Yep. 44.5. Think our internet just went down? Or no? Just trying to test the mid-band. Let's see if it's a breakout or there you go, 145. There you go, 1 point on a breakout.
Yeah, it's still going up. Wants to go to R1. No retrace whatsoever. 41 points plus the previous S2. Testing the midband. Yep. I think energy 30-20 को थोड़ी retrace चाहिए भाई. I think 30-20 needs a retrace. Not yet. Until 8.5, you will not have a black candle on 30-20. Next is 30-20 mid-bang is being tested. There you go, 2 points out of 30-20. Mid-band worked now. And I see 37-41. And went back up. There you go, 30-20. Gave you 4 points from here. We have a first lower high on 15-10. So that is like blue. That's your condition. Yeah, the blue. Let's see how far it can. My black candle is happening below the midband. Let's see. Will it give us some faster response? 5744. But I need a black candle though. So Nasdaq made 20,014. So far, one tick, 4.7, 1 point came from that trade. $20,026 it made as high. 20,026. 270 points push. एक कैंडल पे इतना इतना टाइम लगाती है It's okay. ये वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा होता ना तो ये अब कंसोलिडेशन हो रही है 15-10 is just going flat mid-band. It should come down to the green boxes 57.15 at least, Fibonacci retracement. If it breaks that mid-band, you have a blue box sitting at S1 and maybe S1 becomes a support. I don't know. Let's see. It was kind of going flat. Yeah. So
Yes, sir. Market should be in So I can open a chart. Yeah. Well, since I've opened it, but I don't get all these indicators. SQ पे जाके ES पे जाके डुप्लीकेट होगा Duplicate in new window. न्यू New tab में तो आपने बोला था it's going to. डुप्लीकेट में न्यू टैब हो जाएगा इमेज करोगे So yesterday you said if it's in the same tab, it's going to slow down. yes it does So it's better to have it on new window. no but it's the same thing because the data is the same now it देखते हैं गाड़ी चल पड़ी है नीचे की तरफ के नहीं. can choose That's there you go, somewhat away, features coming down. Why this is YM is down yeah. Okay, but for Nasdaq it's NQ Okay. आपका ES में YM में चल जाएगा और क्योंकि डाटा इतना and then you go to ES respond and then go to ES make sure you go in the bottom right there that's ES make sure you are in Yeah, Nasdaq went took it, NES you're went, trading in YM and then you're trading in ES but that gave us 9 points though. That higher low. make sure in the right graph when you're trading Okay. 3020 has a setup now. Let's see if it breaks previous high or does it want to now finally come down. I hope it doesn't break 45, otherwise we are in higher high again. But right now I can see a setup being formed. Yeah, blue, black on 3020. But if it breaks 45, then my setup is going into the breakout. पहुंच ही गया, breakout की तरफ ही जा रहा है. Done, double top, breakout, and gave you a point from there. But now there is a setup because blue have नहीं वो हो चुका है, फिनिश हो गया. जो अभी mid band नहीं अभी तो वो Nasdaq R1 की तरफ जा रही है जी बड़ी स्पीड से. तो ES पे जो mid band चल रहा है नहीं ES पे तो मिड बैंड था ना, लेकिन वो ब्लैक कैंडल 3020 की बनाई उसने और ऊपर चली गई. तो नाउ इन 3020 वी हैव हायर हाई, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स एट द मोमेंट. Okay. So what I'm saying is like in ES it's higher high now. Everything is green. Yeah, so we now can pick up at mid band. mid bands are because Nasdaq is very close. Everything is very close to R1 now, guys. From S2 straight to R1. Oh, Nasdaq. I mean everything. Like even Nasdaq went to S2 to R1. Yes, maybe तो S1 से सीधा R1 पे जा रहा है. Kind of like breakout trade more than a mid band. Right around. minus 321 तेरा minus 200. Because around 6 o'clock it was hovering around 20,060, so it could go and test that area. Let's see. No, thank you. Thank you. This is a key seva karega.
Mid-band check. चलिए 8.8 दो टिक से ऊपर चलेगी मिड-बैंड टच करेगी ये मिड बैंड ठीक था जी? तो फिर 1 पॉइंट दे गया। हाँ हाँ 2 पॉइंट दे गया सर, ज्यादा दे गया। तो मैं तो 1 पॉइंट पे बाहर निकल गया ठीक है ठीक है, क्योंकि बहुत दोनों हायर हाई हैं, चीजें ग्रीन हैं, बाय करें जी। Yesterday, all trades were going against. If you get your entries right, your probability is higher, right? So, see, from there, 44 to 47, 3 points. प्यार से चलिए इसको घुस गया ना चलिए इसको घुसे में Now let's see, we have again blue, blue, black. Let's see if it on 1510, if it's a breakout trade or a black candle trade. अगर ज्यादा मूव हो रहा है Will it break previous 50 or will it go down, make a black candle to the downside? Going down, looks like. Yeah, let's see. Still needs to make a full 4 candles before we can consider it a black candle. Again, you will see every once in a while, then price then kind of pauses and sees which it's consolidation mode again before it starts to climb again. Breakout is ready. There you दे गया अगर मैं 1 पॉइंट दे दे बस आ जाएगा येलोज हैं, खींच जाएगा अभी। हाँ राइट क्लिक करें, रीलोड नहीं हाँ आ गया, हो गया जी। 1 पॉइंट मिल जाता है आपका, नो प्रॉब्लम। अब यही एक पॉइंट कितने हो गए, 9, 8, 9, 11 पॉइंट हो गए। अब आप वापस देना शुरू करेंगे। नहीं मैं वैसे बता, नॉर्मल कर्व। अब आप कहेंगे जी और ले लें R1 आ गया जी आपका, राइट क्लिक, हाँ F दबाएं। ये देखें ब्रेकआउट्स में मिल जाते हैं पॉइंट जनरली, या मिड बैंड मिस हो गया, ब्लैक कैंडल ना लगी तो ब्रेकआउट ले लो। ब्रेक तो दोनों में से एक ही है ना, क्योंकि अगर जनरली ट्रेंड ग्रीन है तो ब्रेकआउट चांसेस ज्यादा है ना ऊपर जाने के, और अगर ट्रेंड नीचे है तो ब्रेकआउट के ज्यादा। सो ईदर वी आर ईदर सॉरी रेट 4 ticks TP नहीं लॉस आप जितना, मैं तो लॉस रखूंगा जब तक 8.5 वो नीचे तक, बिकॉज देयर यू गो वी आर इन दैट जोन गाइस।
We are in R1 and Nasdaq is in R1 yet? Not yet. Nasdaq still has a bit of a, let's see who does it first. The price is coming down from an area, Yes. then we should avoid the That mid-band is slightly, I can call it riskier. There you go. It gave us a few points from the area. Like, chart अभी लेकिन Nasdaq में थोड़ा रूम पड़ा हुआ है अभी Nasdaq के एरिया में. Nasdaq still has like 10 points. सर कमीशन जो है ना आपकी गेम से तब जाता है जब आप लॉस में हो, जब प्रॉफिट में होते हैं वहाँ पे $10 चार्ज करते हैं आपके प्रॉफिट से जाता है. अब हम किसके उसमें yes legends है they'll charge you $5.80 full years 1 month 1 चलिए मिडबैंड अब एरिया से आ रहा है उसको थोड़ा सा तो so our area worked on ES guys. Nasdaq is still trying to get into R1 but I don't think it will go up because previous candles around 4 o'clock were that high around 74 to 72 and it touched 70. You never know. We will go and try to test. All right, Nasdaq is inside R1 and beautiful, beautiful. And yes, 84. Nasdaq is inside 85. 93. All right, Nasdaq area is done, guys. Good. 93 touched and came down. ब्लैक कैंडल को और ब्रेकआउट ओसीओ पे रखें कि या ब्लैक कैंडल होगी या ब्रेकआउट होगी ना दोनों एक ही है. So R1 is done for Nasdaq and R1 is done for ES as well. Again, like yesterday's, a bit of a sync issue, so In this case, chances are that it will go to R2, right? now next area is R2 to watch for, but it's a bit of a climb. So ये एरिया से अब मेरा ख्याल है वो खत्म हो गया काम आपका मिड बैंड. अब इसने थोड़ा सा लोअर लो लगाना शुरू करना है. लेट्स सी. Hopefully everybody took R1 in Nasdaq, guys. Whoever does Nasdaq, all done. Huge from beautiful and from the area it touched. अब मुश्किल है कि वो अपसाइड वाले मूवमेंट चले क्योंकि यार इतनी बड़ी स्पाइक आई है S2 से चल रही है. सो 10 points, 3 lots. Good. Jitan bhai, good. 10 points means what? 10 times 2 times 3, $60.
Look, it gave us almost 50 points from our area for Nasdaq, but 10, 15 points are okay. Yes, they gave us quite a bit, almost. If you took 55, you were okay. 56, 57. There you go. Mid-band even gave you 2 points in this, but it's a bit of overbought. So ट्रेडिंग स्टॉप को निकल जाता ना ये वालेकुम रवि भाई, वो आपका फ्राइडे का प्लान बना हुआ है आपके साथ तारीख का, लेकिन मेरी ट्रेडिंग हो जाएगा अगर आपका फ्राइडे का आप फिर आ जाए 240 मिनट्स ऑलरेडी बीइंग फ्राइडे इवनिंग के लिए गोइंग अप पहले यही था, मैं सिस्टम का ही था, वो जब फाइनल करने लगे तो मैं फिर जंप इन कर मुझे ख्याल है तो वो फिर अब सारी एग्री हो गए मेहरबानी मैं कह देता हूँ आज था मैं सारी अगर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी कर लेते हैं का भी रात्रि भी हो जाएगी ना 10 से 1 होगी अगली तारीख जो है ना मेरे ख्याल हाँ, वो हमें वो एक वो ब्लैक मिल जाए ना, फिर हम उस एक कंफर्टेबल नीचे आएंगे तो बहुत ज्यादा पावर 30-20 का ज्यादा पावरफुल होता है, स्पेशली देखे ना कहाँ से रिवर्स कर रही है। अभी तो मिड बैंड 30-20 का टेस्ट हो रहा है। तो पहली सपोर्ट 30 to 15-10 मिड बैंड, second support 30-20 mid band, third support Fibonacci green box. So after these three supports you will have a lower high. Until then there's no lower high because first this has to pass these three things, right? So Like this one, even like even the 30-20 is still green. yeah, it's still mid-band 30-20 after that much climb, but it doesn't have energy anymore to go up because Nasdaq has kind of pulled back almost 50 points from your R1. So let's see what happens next. That's the question. But personally, this is just my thing. So that, 30-20 has to turn red. Sorry? 30-20 has to turn red, right? No, it will start turning red shortly. It has to give me a lower high first for me to be 100% sure that you have turned either a lower high, because remember, it's at 25 points. It either has to break 57.35 or it has to go and get into this. Right now, my third level of support is Fibonacci green. Until then, it can still go back up. So when the price is coming down, it has three major levels of support. One is 15-10 mid-band. After, if that breaks, then you have a 30-20 mid-band. That has to break. Then you have a Fibonacci green and blue boxes. That has to break because it could still go into the blue box, go back up, make a lower high or higher high. Then you have the same concept. Will I have an extension or not? If I have an extension on 30-20, I will take a breakout trade.
Makes sense. If I don't have an extension, I will take a black candle. So whether you're doing on mini chart or bigger chart, concepts don't change. So it just happens on a smaller chart first, then bigger, then bigger, then bigger, right? So my ultimate would be if it goes to 57, let's say 41, it reverses from there, goes back up, makes a lower high, and then so two things will happen: whether it will do a lower high and black candle to the downside, or goes and breaks 57.60, right? So do you remember this area for yesterday? What was this area? 57.60. This was very close to expected high. So it touched very close to its expected high of yesterday. Now wherever that, see, now you are inside the blue box. Now let's see if it goes inside the green box. So quite a bit of a resistance happens before. Green box, it hit the yesterday expected high. Mhm. 57. Yesterday's expected high to the dot. 56 हाँ, exactly. वहीं पर गई expected high तो even though वो आज का R1 है. मेरे का बड़ा अजीब सा हुआ कि मैंने ना 10 पॉइंट का वो रखा हुआ था Stop loss? stop loss. वो ये 60 ये 70.5 पे गई है Yes. लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. Maybe with the orders, it just skipped it. I've seen that many times. OCOs don't hit. उसका ट्रेलिंग मैंने लगाई थी, ट्रेलिंग भी नहीं चली. Mhm. वो मैंने जब खोला तो 28 पॉइंट में प्रॉफिट में था. There you go. It touched the blue. Now we are getting a black candle to the upside, and we should be having a setup soon. There you go. Now you have a setup being made. You have a now one of two things will happen. Remember, breakout or a black candle to the downside. But it looks like more breakout chances. It's gone back up because Nasdaq has gone back above inside R1 again. That is suicidal. That was two big, huge candles. Even though it was written pressure is down. The candle is what? Sorry, Nasdaq shot up 50 points in a thing. So we still have a lower high. We don't have. So Nasdaq shot up 50 points in a single click. Still, it doesn't give me a breakout yet. So 30-20, we do have a bit of a step. How strong will be? That's the question. Which stock did it go up of this 50 points? Meta, $22 up. Everything is green now. Nvidia up, Tesla up, Google up, Microsoft up, Meta up. So Meta is the one that's pushing it up. Were there any earnings today for Meta? There you go. Breakout trade is about to happen. Let's see. It breaks and gives us a point higher. 60.5, 61 will consider a breakout done. Not yet. Were we into Meta trade? Earnings? Calendar? Today's no earnings. Why is Meta up? Huh?
Breakout failed. So I kind of give you 2 ticks because it's been climbing for so long, right? So भाई ये काम करो ठीक है ना, 13 पॉइंट में आई है वो ब्रेकआउट के लिए, उसके बाद एनर्जी नहीं थी। हमारी एनर्जी को नहीं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अगेन ब्रेकआउट्स आपके 15-10 के मिडबैंड के बाद जरा पावरफुल होते हैं। यार अभी वो ट्रेड कर रहा है यार, एक मिनट मांजो। That midband was okay coming down. जो 13 पॉइंट की पुश के बाद ना उसमें जान नहीं थी चढ़ने की। हाँ वो वाले ब्रेक एक टिक से रह गया वो। यस अभी का ब्रेकआउट अभी देखें ना, अभी 5। So this midband gave you quite a few points. I don't know anybody took it or not. Very good. अब ये ब्रेकआउट देखते हैं। See that breakout gave you, not yet. ट्रेल किया था मिडबैंड 3। अब हमने बाउंड्री से ज्यादा तो नहीं चले। बिल्कुल नेगेटिव में किस ट्रेड में चले गए, मुझे ये नहीं समझ आती। मैं ब्रेकआउट में नेगेटिव में। हाँ ये वाला तो अभी चल रहा है। ये तो मैं निकल गया हाफ पॉइंट लेके। ओके 2 पॉइंट्स आगे ब्रेकआउट में। और जब मार्केट इतनी 1 पॉइंट का ऊपर नीचे तो लगता है कि इंट्रा पॉइंट भी मिलता है लेके निकल जाओ। That's okay. That's how we will love. Again, it's R1. Because Nasdaq has broken R1 now. Second time R1 से नीचे
S2 to R2. Wow, incredible. Next area R2, guys, which is yesterday's high, highest high. And same for both are in sync now. Same for Nasdaq R2. Possible. $20,105. Area is R2 for both. Only that's all it's left on the table. S1 kind of failed just because the price and the news landed
Exactly 10 o'clock. Yes, So nothing we can do about that. but then Trump was supposed to speak at 10:40? 10:42. No, he's speaking right now. So that's why it's just kind of. Fluctuations, you know. देखें उसने दो उल्टे वर्ड बोलने और ये मार्केट वापस S2 पे बैठी हो Exactly when he said that, बोला दो उल्टे वर्ड में बोल के मार्केट में पलट जाना. Took the midband. took midband, got you a point or two right there. Almost. Well, लेकिन यार अब जरा एनर्जी उसकी भी थक गई है. कहाँ से चल रही है Nasdaq? S2 से. So 19,756 से चल रही है सर. 756 minus 20,105. Almost 350 point. It needs a bit of a breather, and I think he maybe have started speaking already. Midband. 30-20 midband gave you a couple of points. Let's see if it goes into green and makes a lower high, or does it break out? Let's see, 30-20. नहीं ट्रेंड में नहीं, when it turns yellow, it means it's a dead order. So just disconnect and reconnect your connection. Okay. So if it ever an order becomes yellow, that means it's a dead order. Okay. So it won't close until you reconnect and disconnect and reconnect.
कनेक्शन पे डिस्कनेक्ट कर दो. Yes, yes. Question is, are we done our? Losses. No, I mean, वो तो आपके आपके हाथ में है. Market के down uptrend. Is it enough up gone enough where it's maybe Trump sub is speaking, and because it went from 20,105 to 20,050 in less than 5 minutes. So मोस्टली वही प्राइस है डेट से कर तो बड़ी इधर मार्क कर उसके बाद फिर ईस्ट मोस्ट और ईस्ट आता है इधर मार्क करने ब्रेन इशू है सारे सब कुछ है करने को पॉइंट है उसमें तो ट्रेड ला बहुत ऊपर कहीं लग जाता है उसको अधिक कंट्रीब्यूशन 17-15 तक का बिल तो अजूरी बल्कि सामान ये सारे डिफरेंट है दोस्त बड़ी वेव है पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े हुए हैं all right, it's inside the green fibs.
If it goes and breaks 57.47, then it will start to make a lower low. Until then, no. Today, so far, I think we only had one SRES set up in 3020 before market open. No setups at all. So did not trade that type. Didn't touch mid-band. Fifteen, then it is with a lower low. Yeah, so now just waiting for the price to go below 57.47. I think it's gone. Because the next candle, 11 o'clock reversal started, right? So let's see. As it went up, it's went down as well. Hmm? How fast it went up? Oh, yeah, but it normally goes faster down. Because everybody's now panic. Is my high is done? So It's better to go like a take a down trade right now. Or no? नहीं मिड बैंड से अगर हम चला मिड उसके एंट्री होगा ये आप यहाँ एंटर हुए वो रिवर्स कर गया तो तो उल्टा पड़ जाएगा. हाँ तो मिड बैंड सेफ चॉइस है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज बेटर Mid-band on 15, 10. 15-10 so that's your entry point like right now you have double bottom you will Also have to sell, right? so yeah of course because now everything is starting to go into lower low zones so your mid bands to the downside will Should we put a 53 or 53.50? 53 both are 54 53 is fine ये देखें कितना लो लगाता है वहां से There's one more tick in 3020 things will start to go into lower lows Yeah, right. It's no didn't touch mid bands Yeah, I'm glad I did not like put that one. I'm glad I didn't put that one. As you mentioned, try to take it from a mid band. yeah there you have highest risk to reward ratio at mid band because the moment you think it's going down the white line you will step in and it will reverse and you're like what happened so it's better to stick at the mid band and because then your losses are less in case the color changes Is it better to put that 30-20 mid band or 15-10? 15-10 तो टच हो गया है अब होगा.
But still it's going up though, right? No, well, it's not going up. You're done. Your 1.2 points are done. Yep. So it's better to stay at the bus stop rather than running. So So maybe because I put at 53, so I did not touch mine. sorry, Mine got missed by 1 tick. it's okay. It's okay. Now let's see if breakout one works. Yeah, we could take a break. Let's see. So should I get out from this one? Yeah, that trade is done. That mid-band trade is done. It came, and whether you missed it or not, next only opportunity is breakout. Yeah, because I put at 54, right? Yeah, because I was watching 30-20 mid-band too. So if it breaks it, maybe it will definitely. What close was it? Now it's a downturn consolidation. A lot of recent moves are pushing it up, but MES. Thank you, Rafael. Like for asking, like, I'm gonna ask you, like, should I get out of the room with a commitment? And he was like, yeah. It's the first attempt. Yeah. And I'm glad that I did not put it in because, like, 30-20 mid-band gave you points. 30-20 gave you bid points. Retracement divergence, guys. 54-52, almost 2 points there. I get confused, like how this candle gets stuck. Yeah, it's just there's no trading happening at that particular time, right? Sorry? No. I'm connected with AnyDesk to my home computer because that way, because it doesn't work on Mac. So this is the worst time to get into the trade, right? Yeah, because right now there's nothing happening.
लोअर हाई बनाना है पहला बना है, लेकिन नीचे डबल बॉटम है, हायर लो नहीं था, which is kind of the same, but let's see. Let's see. हाई करता 15 10 लोअर लो लोअर हाई हाई लो that we missed that was good no I was watching MES, I didn't get that. oh no I didn't take it MES में नहीं बना No. हाँ MES का आया नहीं मुझे लग It's trying to target the R1 high, right? 58. Yeah, it's testing R1 again. So if it closes at 50, like if it breaks the 58, It has to break 5765 before it goes to R2. So that's my key level for me to see if that would be a breakout of previous higher high, right? yeah. Oh, okay. so Nasdaq ऊपर जा रही नीचे stuck है, बिल्कुल stuck at 20,050. तो गवर्नमेंट तो गंदा बोले अच्छा बोले इससे चलाए तो नहीं, लेकिन जो भी कुछ बोला है 60 पॉइंट तो गिर गए हैं Nasdaq के. बुरा ही बोला So वो अच्छा बोलता है, जब मुंह खोलता है कुछ ना कुछ बुरा ही बोलता है हाँ, वो तो कहते हैं हिटलर से ज्यादा बुरा. सही बात है ये वैसे सेटअप तो है ब्लैक 57 minus 8.5 30 20, but पता नहीं है लेकिन will it go towards high or will Nasdaq, this candle will decide 60 minutes. तो मिड बैंड स्ट्रेट हो गया ऐसा साले कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी. Yeah, but we are ready kind of both ways, right? Don't take that breakout trade, please, because it's so far away from, it's a huge push. So don't try to enter at a 30-20 breakout trade. Right. As we were talking about the OCO, right? Do you think in this kind of stock market, OCO makes sense? OCO always is that either or, right? Exactly. So either a It's a black trend, and yeah. so OC at any time is just either or trade. I would take that or down. So Most likely to go to R2 because it has already worked out.
Yeah, and there's a cryptocurrency broker called Kraken. They're buying Ninja Trader. Nothing affects us. It's a good news that soon we'll be able to trade cryptos on Ninja. So if you have a cryptocurrency thing, you can directly trade. So if you want to see what XRP is doing, you can use this. You want to know, so use this for. So let's see if 57, 58. So that's just benefit of, we won't get affected. Yes. Yeah, it's benefit for them. जी सर मैं तो मान रहा हूँ क्योंकि डबल बॉटम को मैं तकरीबन वही समझ रहा हूँ हायर लो तो बनना तो चाहिए 57 58 को 8.5 से 2 पॉइंट मिलने चाहिए हमें 57, 49, 75. आज जो भी आपका 30-20 का नंबर है उससे 8.5 पे ब्लैक कैंडल बननी चाहिए So just remember, setup after setup, every mid-band becomes the highest probability. Swing, retrace extension. There you go, 2 point, almost half a tick, and went back up. But let's see. That happened quite quickly. Come on, push me down for at least 1.5 point more and break 57.47. So going there, struggling. Nasdaq is red, so should be helping it to push down 9.5. 3 ticks so far. Doesn't have the energy. Problem with this trade is its a stop loss is way too far. 34 ticks. Because the 60-minute Nasdaq candle is blank, just a line. Doesn't have any body to it.
Come on, Nasdaq. All right, Nasdaq has red now, which means 9.75, almost. 10 point, there you go, 2 points done. Funny thing is, the moment two are done, the remainder come anyway, right? So the first two are the most difficult that test your patience. Look, 11, 7. And then you're like, man, we'll only take two. It's just because, especially when that candle kind of pulled back up, we're like, oh my God, that. Oh, there's a setup at midpoint. Now the mid-band setup should be okay. Only problem I see, by the way, 30-20 strength did not go down. Look. But it's 19 minutes, right? I don't know if that would be considered a divergence, but both are red. You should be in shorts. So if both colors are red, you should be in short. The 30-20 strength is still 38%, right? Yeah, so it has more chance that it can continue to slide down, right? See, why am I looking at a bit of a divergence? Look, 1101, the price was 57.47. The current price is 57.46, but your strength hasn't gone down yet. So but we will stay in selling. We will stay in selling because both charts have turned. All right, still going down, pushing down. As you mentioned, I'm trying to get out today, not my day. You're going. No, because the thing is that I lost almost like $400. I recovered about $300, Okay, but I don't want to risk more. okay, that's fine. Because what about if I lose again? Apex sale is on. Back to 1 day pass, $40 resets. This is the point. As compared to trying to something that we have not And mid-band was okay. Yeah, I took 1 point. Right, I recovered my loss. I'm good. Thank you, Rafael. Where did you go wrong?
earlier. I took one wrong at the mid-band, and Okay. the market reversed. Okay. And the thing is that, like, I was on the ES, and unfortunately, by default, instead of taking one lot, I took two lots. That's risky. ये हुआ है? 450 किलो हैं? 450 किलो Yeah, तो मैंने recover कर लिया, तो then now I'm like a zero. and recover नहीं हुआ तो 2 लॉट कहाँ से आ गए? वो गलती से लग गया। वो पता है स्ट्रेटजी लगा था तो उसमें एक की बजाय दो लग गए गलती से। यार इतना तो ना करें यार। I was so involved कि मैंने strategy लगाई थी उसमें Exactly. क्योंकि वो स्ट्रेटजी मैंने पता है वो दो लॉट की लगाई थी एमईएस के लिए ना, वो साला ईएस पे जब करा तो वो मैं उसको ट्रेल लॉस कर देना, उसको चेंज करना भूल गया। तो देखिए कितना प्यारा मिड बैंड चला है, लोअर लोज हायर. So after SRE setup, your mid bands have the highest probability. And now there's a chance of breakout. Let's see. I think should be okay, but it's so darn slow Yeah. that That's the reason why, because it's very hard for me to recover that $450. That's just like, I don't want to risk anymore. no. But you recovered, right? Yes. Yeah. क्योंकि आपने लूज बड़े में कर दिया है और रिकवर छोटे में कर रहे हैं. हाँ. अच्छा अच्छा. 2 लॉट एक ट्रेड खराब होना सारा ही 2 लॉट बहुत होता है. क्योंकि दो लॉट में एक पॉइंट ही मिल जाए तो वो 100 बनता है ना. तो कमीशन कितना दिया आपने $12 यस. तो भैया वो मैंने एमईएस के लगाया था वो ना प्रॉफिट लेना, वो चेंज में करना भूल गया। But when we exit, right, from the ninja, should we say yes or No, no, always no. I think price will consolidate around here for some time. 15 करने से सेटअप बन रहा है loss again? Before I go into loss again, I remember the thing to cut down your losses. How to access your YouTube channel? Like, you have to log into the No, super areas? no, just on the Super Areas website, there is a YouTube channel. Oh, okay. Because yesterday I connected to the chat team, they sent me the link. It's written right on straight. Can we access that from the cell phone as well? or Yes, from the yes, laptop? no problem. Cell phone is. No, because on super areas you cannot connect your cell phone, right? No, but the YouTube channel is a YouTube. Nothing to worry there. Because it's very easy to listen to, like when you're on the AirPods, right? That's why you keep saying 48 loss. अच्छा तो कम से कम ये इसको बनाना कर देते थे तो भी अगर नहीं तो 4 के बाद मैनुअल तो कभी भी कर सकते हैं तो अगर आप दोनों देख लीजिए दोनों की योर कस्टमर एक्सपीरियंस होगा तो मैं ऐसे करके ऐसे बताओ कि सब कुछ ऊपर बना के स्टॉप आया और फिर स्टॉप से
तो कम से कम बार बार तो आगे का पता लगा इतने फ्रैक्शन पर सेकंड में मार्केट चेंज हो गई। अच्छा बताइएगा क्या डेमो को डेमो को उसको समझ आसान रहेगा, गलती भी होगी तो कम से पता लगेगा। इसका देखने का मुझे ब्लैक करने कोई छोटा सा रिट्रेस हुआ ना 15 दिन में एवरीबॉडी टू क्विट बहुत ऊपर चली गई है, थक गई होगी। So Vikram, if it's a shorter retrace, so then maybe if you miss the midband, then there are chances of breakout then because it will be a longer extension. Yeah, that's what even I'm sitting on. I wanted to push that. Doesn't work on my one. I think after I should be ready to go for a test account. Okay, if you, whenever you are, Because takes 5 minutes. Yesterday's days was bad, but like Monday, Tuesday, If you're Yeah. consistently I've been following, making like 2, 3, 2, 3. that's fine. 2, 3 is the goal, and then negative 2, 3 is the goal. Like if negative 2, 3, you go. You say, hey, this is not working. Right? And in the test one, they let you make between 2 and 250. No, you can make maximum 450 in one day. And so your limit is 450. So within 3-4 days, you can have the. Yeah, but they want you to do this in 7 days. So when tomorrow when you want to sign up, I'll rewrite on the board your rules. No problem. Tomorrow, I think. No problem. And tomorrow also, I think our simulation thing is also ending. That Daniel, you can text him and he'll reply. Daniel, subscription for which? No, demo. Yeah, demo. So once you get a legend, they give you a demo free. So that comes in free as well. But for this demo, if it gets like it's getting it, Yeah, another email account, so we need a different email. different email account. Correct. I think गाड़ी चल पड़ी है नीचे की तरफ. Take care, जी. $1.25 times 4. इसी नोट करने में सीधा पता लगेगा कौन सा ये थोड़ा रहेगा तो स्ट्रेस नहीं रहेगा इसके तरह और खुद प्रोग्राम Another mid band was okay. फिर मिड बैंड ठीक रहा. मेरे को कहा तो मैं उसको ये दो चीज मिला के रखता हूं जबरदस्त सही कर रहा है तो उसमें ना निगेटिव करते हैं मार्केट में भी है तो ये कौन से बाय आस का प्राइस सेल कर रहा हूं मैंने भी दबा के जब तक दबाते तब तक मार्केट होती है. Thank you, Rafi, for today, sir. No problem. Best of luck, G. Every day we come in with the same options. Nothing changes. Only thing went wrong today was the news and S1 collided. Exactly. So that's the only thing. और वहीं पर आप दो लॉट में थे. दो. मेरे को स्टडी देता हूं अगर वो ना हो कोई लॉस आता होता. हाँ. कल एरिया से एली को पकड़े. नहीं लेकिन R1 पूरा चला है. लेकिन R1 100%. R1 for Nasdaq worked. R1 for ES worked. S1 I never said take S1 anyway for. तो न्यूज पहले आ जाती है ना. अब वो न्यूज ने क्या आई वो ग्रीन न्यूज थी वो शूट कर गई. राइट. सो जैसे आपने मुझे बोला 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में. हाँ. वेट कर लें. कैसे मुझे आप really मिलेगा फिर like thank you because the thing is that आज मेरा जो loss था ना it went to almost 800. Wow. And you recovered quite a bit. Oh, I went back straight to almost 14. Wow, good. तो अब वो 25,000 का था 24,900 पे आ गया. ठीक है. तो कम से कम मेरा जीरो पे आ गया कम से कम ऑलमोस्ट. मुझे स्ट्रेस हो रहा था but I remember one thing which you said in the pledge, right?
do what you see. Correct, What you please. think. That's why to make it easy, I change the strategy. 1 point, get out. 1 point, get out. 1 point, get out. Don't wait for the long. So thank you, sir. No problem, जी बस. See you tomorrow, bright and shining. Take care. Bye, guys. अब कल का वैल्यू एरिया ऊपर होगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी. ऊपर ही ना वैल्यू तो वो एडजस्ट हो जाता है. The market almost fell down to S1. R1 से आ रही है. So वो जो हम टर्म बोलते हैं, एक माइक्रो छोड़ा हुआ, 2 माइक्रो छोड़ा हुआ, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये R1 से आपने बोला आ रही है, R1 से वो लोग छोड़ा- पोजीशन ट्रेडिंग में छोड़ जाते हैं. अच्छा, पोजीशन ट्रेडिंग में, हाँ उसमें तो आप लॉन्ग रख सकते हैं. Beautiful 30-20 midband. आसाम जी, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम.
recovering from that flu. Much better now. Look. Now they are much better. काफी बुरी हालत हो गई थी flu की। सब ठीक चल रहा है। But sir, another day, every day, same areas, mid bands. वो strategy automation नहीं हुई। नहीं sir. Breakouts. breakout। बहुत bugs हैं क्योंकि उसमें biggest issue हमें आ रहा है जो false rejection wicks है ना वो फिर उसको consider कर लेता है कि हाँ if this was a smooth it works well like from point A to point B but whenever there's a rejection wick of a bigger it starts to consider that a newer high right so it's a so but otherwise areas mid bands things are working okay no problem. So this almost came to PP S1. Let's see if S1 becomes a bit of a support. अगर ये हायर लो बनाता 30-20 इसकी कोई है वैल्यू नीचे की मार्केट है Yes. Okay, first, because we had that one setup worked and it gave us 22 points. But forget 22, we were after 2 points. Yeah. So in double bottom, I'm still considering as a thing, but... ये इसको डबल बॉटम नहीं दिखा रही है इसमें एलएल दिखा रहा है अच्छा ठीक है और ऊपर एलएस दिखा रहा है ठीक है और देखते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए एलएल को एचएल और No. करता See, the thing is, I'm on MES. So what I was saying is, around this time, it almost made the setup. Look at this. You had a blue, and this was considered a blue because it's a double bottom, so it's a higher low. So after a higher low, you had a lower high. So we had to go down. that big one Yes. So our setup did not fail at all. So higher high, higher low, because this number is same. Quickly got overbought, and then now it's now to go up. I'm waiting for a higher low. If on 30-20 it gives me a higher low, let's see when the next candle opens in 12 o'clock. अगर 15-10 में ब्रेकआउट हुआ तो नेसेसरी है कि 30-20 में ब्रेकआउट होएगा नहीं वो ब्रेकआउट 30-20 के बहुत दूर होते हैं. उसका बोले में नहीं 15-10 में ब्रेकआउट Different price, different higher highs, different lower lows. Like look, this previous breakout was 47, but 30-20 का भी breakout नहीं आया. ये तो बहुत R1 के ऊपर है हाँ. बट अभी लोअर हाई रखा हुआ है लेट्स सी Not yet. I'm waiting for a higher low. Because right now it's a lower low and a lower high. Higher low, black candle to the upside, or a breakout to the downside. One of two orders. बट अगर 15-10 में मार्केट ऊपर जाती है तो 30-20 देगा कि नहीं देगा नहीं ना Not yet. Completely different उसका. पहले 15-10 जाएगी ना जी. तो हाई ना बना
न्यूज़ होते हैं उसमें क्यों नहीं? थोड़ा सेफ्टी गाड़ी वगैरह जो है सारी गाड़ियाँ मिल गई कब से होनी चाहिए टाइम वेस्ट हो रहा है हाँ आप रेगुलर खराब हमने जब शेड्यूल किया था ये तो ट्रिपल से उठता है उस टाइम पे तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया ये नॉट इवन स्टार्ट कर ये ब्रेकआउट नहीं अभी तक शुरू नहीं करता मैं don't hold it. I'm very comfortable in moving my stop losses. Exactly. And I put additional stop losses. Because let us say, पहले 10 ticks के लेता हूँ. I'm very vulnerable. Makes sense. तो जब तक वो 10 पे टिक नहीं जाएगा मेरा stop loss 0 पे नहीं ये ब्रेकआउट भी चल गया और वहां जब फंस जाती है ना तो ग्रीन हो तो उस टाइम वो करती है कि लाइक जाएगी कि नहीं जाएगी प्रीवियस हायर आए तो तोड़ के आगे चली गई ब्रेकआउट हो गया प्रीवियस लो तो तोड़ के नीचे चली गई और अभी भी वो हायर फ्लो बनाया हुआ है इसमें वहां पे 30 पॉइंट ये क्या है एक्सटेंडर मैं एरियाज का होता है ना अभी जैसे यहाँ पे बैठी हुई है एरिया में R2 R1 में बैठी हुई है so it's more of a consolidation thing that normally happens in areas so it was looking normal मैंने यहाँ से लिया R1 से इसका पेपर रख चुका है एक और निकाल अभी स्मूथ नहीं है ना मार्केट तो 11 भी बज चुके हैं और सुबह भी मॉर्निंग इवन झटके है डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहा है पता नहीं बोल के चला भी गया बोलता क्यों है इसको तो लिखना आई एम सो हैप्पी कि कोई अपना ये रहता प्राइम मिनिस्टर यूएस ने किया यूके चला गया पहले बताना था ना तो क्या चीज but he is a good economist though if he wins I'm pretty much sure it will be better for Canada because they're looking for other options there's no one else like he really like Malika if liberal like they did not change the prime minister I was definitely voting for a conservative but now it makes me think like Yeah. vote is over now I don't think Pierre has a chance anymore. no Pierre doesn't have any chance because even the poll is almost like in the favor of like a liberal right now Yes. क्योंकि the thing is it was carbon tax इससे बोला चल carbon tax मुद्दा ही खत्म है कंजर्वेटिव का और ऊपर से अगर कुछ होते हैं बाकी चाइनीज मार्केट अगर खोल दिया उसका बहुत फायदा नहीं पर चाइना ने 100% हमें हमारे कोरोना के ऊपर
चल मैं जाता हूँ Oh, yeah. नहीं यार You were so much, right? But at least like now you will like a little bit outside, like outside support. हाँ, बन जाएगी ये bottom of the पानी bar गरम किया पकड़ ले जाएगा। सकते थे लेकिन बहुत tight है। नहीं नहीं आप ले लिया ना कर लिया अब अगर एक बार पेट करना तो छोड़ दो वे लोअर आएंगे अच्छा डायवर्जन भी लगती है प्लस उससे लोअर है तो 15-10 का जो बैड होगा वो अलग प्रॉब्लमेटिक होता है इसकी जैसे वो हायर हाई बनाएंगे ना 30-20 में 15 का सेम probability gets better अभी अब ये डायवर्जन आई 15-10 की ये मिड बैंड तक आया हमने नहीं दिया अगर हम मिड बैंड ले भी लेते तो कहाँ ऊपर चली गई it would have given you 2.3.44 up to 49.5 53 4 point तो ये था so we keep missing our trades that's the problem So again, black candles with the downside or a breakout, one of the two. So every mid-band, if you didn't take a mid-band, you have two options, this way or that way. 1 point this way, 1 point that way. तो चलिए ये बड़ा अच्छा उसका रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और वो जी कौन देगी Mid-band से? पता क्या हुआ बॉटम ऑफ द बार लिया Okay. बॉटम ऑफ द बार से 3 4 trades चल रहे होते हैं आपके. So looking at 1510, I have two options. I have a higher high, higher low, and lower high. Whether I will take an extension to the downside, a sell stop, or a buy stop. हाँ हाँ ये अभी चल है नहीं 1510 पे बन रहा है. So minus 4.75 minus. माइनस एलएच है ना Yes. जो ग्रीन है that means they are more than 55% buy-in. ये है ना सर Bottom of the bar, top of the bar is up to If you look at 60-minute Nasdaq, it is empty. There is nothing happening. Whether green, if it goes green, this will go green. If that goes red, there you go. Now we have a bit of a green. So let's see if it gives us a breakout. बट अभी तो दूसरा वाला तो बनता है हमारा या ब्रेकआउट है यहाँ पर अभी तक तो बन रहा है.
का था ना प्रॉपर हायर लो हायर हाई आपको ये लगता है कि ये ये हायर ऐसा एक और फिर लोअर हाई सुबह नीचे होना चाहिए। early morning setup आया 30-20. I got only 2 points. हाँ, हाँ। 75. वो really? Yeah. 5:30. अच्छा सुबह जो आया मैंने 2 पॉइंट लिए उसमें से 75 पॉइंट विदाउट एनी ब्रेक. आया ही नहीं, वो बस चलता गया. मैं तो 2 पॉइंट भी नहीं लिए बस 75 पॉइंट. 5:30 am like. सेटअप जो आया था. आज सुबह तो I took that was 2 points. 75. Time they come to end up. There you go. Nasdaq has gone crazy. वो 2 पॉइंट लेने में he was struggling at that time. वो एक वो फंस जाता है ना वो क्या, उसके बाद तो समझ गए कि वो एक दफा वो डैम टूट गया एंड देन मैं आज सुबह जब उठा ना it picked up now. वो नीचे से आके तो निकल गया एक पॉइंट. -44 आपने लगाया? तो मैंने देखा मैंने बंद I कर got दिया। it too. ये देखें इस पे एक पॉइंट मिल गया ना सेल स्टॉप में. मैंने लगाया 2 पॉइंट का था बट मैंने डेट पर बंद चल ठीक है ठीक है. नहीं फिर एटीएम फिक्स रख दें. मेरी फिक्स एटीएम 4 ticks up 4 ticks down. आप कहोगे जी मैंने स्ट्रेट में लॉस ही 1 पॉइंट लेना है और प्रॉफिट भी 1 पॉइंट. लॉस तभी 16 टिक का रखा हाँ नहीं देखें वहां तक आपको बैठना लीगली पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट ब्लैक कैंडल वहां बनेगी. देखिए अगर आप ये आप पे डिपेंड करता है. आप कहेंगे जी लेकिन वो शायद आपको 1 टिक्स दे और निकाल दे. True stop loss on a black candle trade is 19 ticks or 34 ticks. Now I know. So today that's what he was saying. He only took 2 points, but the swing went for 75 points, right? Not even single rejection. Okay. Even सीधी गई. पूरे 5 बजे देखो आपने. लेकिन सुबह 8 बजे वाली भी नीचे गई है. सुबह 8 बजे वाली. 73 points it went one way no returns. No single rejection though. It just went. Just remember that right now we have a setup to go upside on 30-20. Oh yes. Higher low. So let it keep going down and down and down, no problem. So I have on 30-20 2 orders. One above my black candle, 8.5. One below the extension, if the extension. So sell stop at 57.35. I will switch to ES because I'm now doing an EA. PAs I'm done. So 57.36 is my previous low. So sell stop is there. 36 पे नहीं 36 पे 36 पर टूटना चाहिए ना वरना डबल बॉटम बनाएगी. So my sell stop is at 57.35 sell stop because that's where the previous low. Where's the previous low? 57.35.50. So I'm 1 tick below. So that's my extension trade. If I want to do a so it would be 57.42.50. 57.42. Now it's falling. So my number is changed. Plus बेनिफिट करता है. take care, Ji.
वो तो 13 पॉइंट गया, मैंने तो 2 पॉइंट लिए हैं। तो ये नहीं पता चलता कि 2 के बाद वो वापस चला जाएगा कि ट्रेल के लिए 2 पॉइंट छोड़। ये होता है ना कि हम सारों में से कोई ना होता, यहाँ सारे बैठे होते हैं कि अब देखिए उन्होंने कहा 75 पॉइंट वर्सेस 2। मैं ये कहता हूँ 2 पॉइंट मैंने पीछे जाके बैक टेस्ट किया हुआ ना, 2 पॉइंट मिल जाते हैं, 1 पॉइंट मिल जाता है, राइट। तो लेकिन अगर हुआ ये कि वगैरह वो, मैं एक्सटेंशन का वेट कर रहा हूँ कि इफ इट ब्रेक्स 57, so a new candle open at 12 o'clock, let's see which way it wants to open. 3750 से नीचे जाए ना, पहले प्रीवियस ब्रेक करे। प्रीवियस है आपका 57 35 50 इसका सेल स्टॉप कहाँ पे लगेगा? सेल स्टॉप एक टिक नीचे, मेरे 2 टिक नीचे ठीक है, इट्स फाइन, इट्स एक टिक नीचे कर दो ना, इससे एक टिक नीचे कर दो। and the buy stop would be 57 37 75. और 2 को याद है। तो ऊपर गई तो ऊपर ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। फिबोनाची पे ही है इसको। Not bad. So black candle is at 56.40, 46.50. 46.25. हाँ. $57.37.75 plus 8.5, 46.25. Let's see. 46.25. Still didn't pick up 8 because I'm sitting at 25. It went to 75. गैप ट्रेड है जी, बहुत तगड़ा गैप ट्रेड है। 30 गैप 20 ट्रेड का मतलब क्या है? नीचे जाने का है कि ऊपर जाने का है? नीचे जाने का। नीचे जाने का है। और बाय पे क्यों लगाया? नहीं नहीं, बाय तो हमने किया था नीचे हायर लो देख के। हाँ वो तो है। हाँ जी, 30-20 का जो मिड बैंड है वो टच हुआ, नीचे टच नहीं हुआ ना वो। नीचे तो ऊपर नहीं आया। हाँ, वो तो उसमें नीचे भी जाना है। 2 पॉइंट दिए। 30-20 के मिड बैंड पे अगर आपने शॉर्ट किया होता हाँ। तो वो नीचे आई है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। यस आई और फिर ऊपर गई। see my OCO orders on 30-20s are still there.
There you go. $300. $300 got my thing done. And what happened again? I didn't close. So I took it. I saw that and didn't have an ATM on. That just shot up and shot down. That is crazy. That's why you gotta have an ATM. Because it took me in, I saw 250 and I didn't close. हाँ माइनस 200 देख के कि स्पीड से गई है जी ऊपर. उफ उफ. आपने एटीएम लगाया हुआ था किसी ने? मेरा एटीएम लगा हुआ था. मेरा उसी ऑर्डर लगा हुआ था ना आपका. वो 2 पॉइंट का लिया उसने दिया. First I saw minus Yes. 200 and then I saw plus 3750. Okay. I came in. But that was shot up 15 points, but it's okay. That is Trump speaking power for you. ट्रम्प को चाहिए मैं स्पीच पहले दिखा दूं क्या है. ट्रम्प के दिमाग को नहीं पता होता उसका मुंह क्या बोलने वाला है. हम पहले से पहले हम देख लें कौन सा ट्रेड है ना इसकी स्पीच कितने टाइम पे क्या बोलेगा. ट्रम्प के दिमाग को नहीं पता कि उसका मुंह क्या बोलने वाला है. Exactly. क्या हुआ जी? पता नहीं कौन सा चार्ट फ्रीज हो गया and then it didn't even hit the profit. Didn't pick up? Pick up the order but then it hit. अच्छा एटीएम नहीं एग्जीक्यूटिव स्पीड से आया ना. एकदम तो like it just shrink, you know. यस यस. तो सेटअप इसमें भी आ रहा है ना 15-10 में. नहीं खत्म. हेलो. बस से मुझे भी लगाता हूँ. अगर मैं दोनों सेटअप ऑन कर दूँ तो पहले बाइडर किसको जाना फिर नहीं नहीं उसी ऑर्डर. मैं बिना उसके एक स्ट्रेटजी चेंज करके लगाई. नहीं बिना उसी हो तो सारा कुछ खुला रहेगा ना. उसी ऑर्डर ਹੁੰਦਾ या बाय स्टॉप या सेल स्टॉप. One cancel. टेक केयर जी. टेक केयर. सर एक मिस्टर उपल ने आपको फोन किया था. इज माय फ्रेंड रिगार्डिंग ऑप्शनल आपसे बात हुई थी. ओके. आपने लिंक भेजा था. हाँ हाँ they can just sign up. That's it. Tesla started to go into red. Yes, so So thank you. take care, Ji.
अच्छा जी क्या जो कर रहे नहीं ये मेरे ना दिमाग पर पड़ने वाला है इसको ऐसा करो ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही कैसे करो ऐसे करो मुझे कर दूंगी इसके लिए Back to S1. Let's see if S1 becomes a good support for both. वैसे भाग रही है ना सैनिटाइजिंग नेगेटिव ट्रेड हो रहा है वो भी बोलेंगे और जिनकी पॉजिटिव ट्रेड हो रही है वो भी बोलेंगे मैंने ये समझा से गाड़ी चोरी करती है All right. भाई 3 का व्यू है 500 वहां से कंप्यूटर उठा के यहां आ जाइए ऊपर ऑफिस में पहले होटल लगा दो टच किया भी जा रही खाना सही कर दिया So that's a gap trade as well, but things should go back up, hopefully. S1 didn't get tested. All right. first time I'm glad I didn't touch my order. Huh? For the first time I'm glad I didn't pick my order. सर ओके Take care, boss. ओके मंडे में मेरा दिल है कि 10 days मैं यहाँ ना बैठूं
कोई और लीड करे। नहीं सुनो तो सही। मैंने रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रेड्स अपने कि मैं एक अकाउंट लेके 9:30 to 11 रिकॉर्ड करूं कि मैंने शाम को दिखा दूं भाई ये मैंने ट्रेड लिए हैं और 2 पॉइंट के लिए कि 9 से 11 आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो बेशक 1500 का अकाउंट उठाऊं या 2500 वाला या 3 लाख वाला, सिर्फ दिखाने के लिए कि 9 से 11 2 पॉइंट आ जाते हैं ट्रेड डाल के। सर कल एक्सपेक्टेड हाई ले आ सीगा ब्लास्ट टू द डाउन साइड बट मैं 200 देख के निकल आया यार ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ लेकिन 200 देख के क्यों निकल आए? बेशक चली गई थी लेकिन उसके बाद सेटअप देखा कितना बढ़िया है SRES और उस ब्लैक कैंडल ਤੇ मैं चीख के कह रहा सी यानी ਹੁਣ ਥੱਲੇ चले जाना है। चलो एनीवे इट्स ओके। So just for trading, just for no, everybody area was expected high. Only issue why it went slightly up is because Nasdaq still had 20-point gap. I was watching live. I'm like, all right, Nasdaq expected high still has 20 points, which mean ES to get to Nasdaq, it will go above slightly, and then both shot down spectacular. So. There you go. Look at another mid-band worked. So come on, man. Another 30-20 mid-band, 15-10 mid-band. Yeah, 15-10 works, 30-20 works. Yes. ये हाई साइड में बड़ा चक्कर होता है। छोड़ दिया। नहीं, अभी हाई लो बन रहा है इसमें। हाँ ये कुछ बन तो रहा है। 15-10 में तो बन गया। 5-7 ठीक ही है ना, कभी तो नजर नहीं आता उसमें। अब तो मुझे ना माउस को हाँ एक और टिक है ब्लैक एंगल के लिए। अब ये देखते हैं कितना एक टिक देती है। It should break previous 39. Hopefully we need 4 candles. For 15-10 we have a setup. Nasdaq S1 नहीं ये वाली वहाँ से बाउंस बैक हो गया वो उसका सपोर्ट ब्लैक एंगल भी नहीं बनाया अभी तक। कुछ भी नहीं, अभी तो वहीं पर फंसा हुआ है। होता ये कि आप बैठे रहते हो, जब आप गिव अप करते हो निकल जाती है। तो मैंने इनको पता है क्या, जब सिक्योरिटी पे जाता हूँ इतना प्यारा सेटअप आया हुआ होता है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं 3 सेटअप आ गए। एक वैसे 3 setups today. 3 setups today came on. right at the end. Sorry, switching. That's a smoker's dream. Wishful thinking. अभी भी है ना सेटअप तो? सेटअप तो है, जा नहीं रहा और एकदम से भागे। हम चाहते हैं भागे। ट्रम्प चाचा is a problem. मेरा तो ऑर्डर हिट हुआ 8.5 पे मैं बैठा हुआ था, 8.25 तक आके नीचे गई।
सफारी भी तो नहीं देता ना। इसकी सफारी देखी आपने? कितने पैसे वेस्ट कर जैकी दादा को बोलो। ये देखिए इसका वो I have a feeling they want to raise 5-7, 3-1. Short of the reversal, larger the spread. ये भी वैलिड है। 5-7-3-1.25 के नीचे है ना एक शॉर्ट होगा। ये एक्सटेंशन हो जाएगा। Short is the reversal, larger the spread. एक gap trade है जब भी होगा। Ready है। नहीं हमारा वो ऐसा ही तभी ठीक है। नहीं ये ऐसा नहीं सेटअप तो है ही नहीं है। लो हाई लो। अच्छा वो वाला 15 का। आप क्या ब्रेकआउट पे हो? मैं ब्रेकआउट पे था। तो ये इसने बहुत छोटा रिवर्सल दिया है। अच्छा 15-10 में और 30-40 दोनों में जो रिवर्सल आया है बहुत छोटा सा है। And every small reversal gives a large swing. तो फिर तो उसी में होगा। कहना मतलब भी 30-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਸ कहते हैं सेलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ और 15 में कंफर्मेशन एक और आई हुई है उसका भी छोटा रिवर्सल आया हुआ है लास्ट ट्रिगर्स बेंच कर रहे हैं ग्रीन वाले मैजिक बैंड से मैजिक बैंड भी नीचे आ रहे हैं और स्मॉल ट्रिगर्स भी खुले हुए हैं अब ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं ना ब्रेकआउट का सेटअप है। रेड कैंडल पूरी बात 30-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਸਪ੍ਰੈਡ लेट्स सी और दो That's a divergence huge on यार चल 3 टेक दिए थे इसने अच्छा भाई एरिया से बिल्कुल बाउंस हुई है जी S1 गुड सपोर्ट ये मिड बैंड को मानेंगे एरिया से आ रहा है। ना मुझे 30-20 की डाइवर्जेंस तंग कर रही है उसमें बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है अच्छा वो नीचे आ रहा है वो बहुत ऊपर है हाँ वो भी स्ट्रेंथ देखे ना काफी ऊपर खड़ी है मतलब ऊपर जाना चाहती है। मेन एरिया एरिया मिनिमम लॉस trying to go down large figures खुले में है small figures भी खुले में है सब Nasdaq कितने जा रही है सर ये तो वापस S1 से वापस जा रही है 60 मिनट के चार्ट की कैंडल देखें now it's back into S1 so red
So Nasdaq has gone back out to S1 bottom range. So all the gains that who made is gone. Who? Tesla down 232. Google down. Everything. Tesla has become more of a political issue now. सर ऊपर जाते हुए भी हमें तंग कर रही थी, नीचे आते हुए falling 943. एरिया तो आ गया चैनल तो एरिया में है S1 में इनफैक्ट फिबोनाची का जो टॉप है ना वहां से ऑर्डर ये गिरते जाएगी क्योंकि 32 प्योर डाइवर्जन है ये गिरते जाएगी ना नहीं 32 से बाय क्योंकि एरिया तो रिवर्स आएगा सॉरी थर्टी ट्वेंटी का भी काम करेगा क्या मिडमैन कराएगा ये नीचे आएगी 3750 मुझे पढ़ देगा अब ऊपर जाएगी यार 33 से 30 पे आएगी 57 33 से 30 पर आएगी दोनों के मैजिक बैंड See, magic bands change directions. Yeah. That's no big deal. They're just support and resistance, a minor, not a major. कहीं नीचे अब यहाँ पे बनेगी डाइवर्जन. It'll give you a higher low. Breakout के चक्कर में breakout होगा. The reason I'm saying ये breakout होगा बहुत तेज नीचे जाएगा is because 30-20 में ना remember one क्या 30-20 को 15 है ये strength जो है ना if it's not like this curve fades हो गया जब भी आप ऐसे देखो ना straight line parallel to each other. Nasdaq fell below S1. If it's like this, Look at the volatility. Amazing. सन हमेशा मार्केट 5 गुना है ट्रेल की है Yeah. उस मिडबैंड है ना हाँ माइक्रो पे शुक्र है माइक्रो में आया है 5 माइक्रो कर लें, एक से तो नहीं पास होगा यार. पाँच पांच हाँ। माइक्रो दो या दो माइक्रो में भी काम होगा. हाँ 5 में हो जाता है जल्दी. मैंने पढ़ दिया सारे 5 माइक्रो से. अब माइक्रो में ट्रेल करने में ना डर नहीं लगता. डर इस चीज का नहीं कि ज्यादा पैसा लूज हो जाएगा. ट्रेल कर रहे हो प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है. यार आराम से थोड़ा पार हो यार माइक्रो सर वेट करोगे तो ठीक. यार ईएस में ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. No, because it's good if you have a $300,000 account, you 7,600 threshold, go with one mini, one. So that's it, one. I know people in 1500 they're going with 2 full years. वही तो लेकर इनसे गलती हुई है ना आज. वो तो गलती हुई. वो तो गलती है. नहीं फिर वो जल्दी बनाएंगे, जल्दी वापस आएंगे. देखो fast success in this business leads to fast failure Yes. also. So this is what I'm going to do. I have a prepaid card, so let me buy an account, let's say, and I'll trade here live. So whenever there is a mid-band trade, I'll put a trade in, and let's see if I can manage. नहीं ये क्या इसके नहीं ये क्या कहते हैं
a per year account, not a per year, sorry, a funded account, which is okay to see. And you guys can see where I put my entry. I just have to see which one has a balance of about $15. And I will do that, tell you, hey, I'm about, everybody says I put a sim trade. So let me buy an account to show you. It's okay. I tell you one thing. If people No, then you will know my strategy, my stop loss, my everything, right? Then, okay, where's the ATM? So first I gotta just check if this credit card has any money, because these are pre-paid. Because remember, I'm not getting any payouts out of them. This is just a test account, right? So India to change over. no, nothing changed. Another mid-band worked. यार 1510 की डेली डाइवर्जेंस मैं तो देख ही जा रहा हूँ. Its first diversion for 1510 is not really respecting it. Maybe second or third, but how much? 5. value area तो bounce back हुई है. अच्छा नहीं? Yeah. Oh, very good, yaar. Like, I wasn't paying attention. ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ S1 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੌਰੀ S2 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ S1 ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਸੀ Okay. ਚੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਤਾ नहीं, मैं आपको उधर बताऊं, S1 पे न्यूज आ गई थी. एग्जैक्टली 10 o'clock पेंडिंग होम सेल्स S1 के अंदर न्यूज आई है आज वो 10 बजे. The news overtook every single thing in but your R1 worked beautiful. 5336. Mid-band 3020 worked. Yep. $15.10 has that setup coming now. Awesome. value area नहीं तो area तो यार ready रहेगा मुझे आवाज मैं परसों ही होते गया तुम्हें कर दिया okay everyone is there.
If the reason why I didn't say $40. $100,000 Acha, very nice, very nice, very nice. This one has. Hold on, so. वो ICU में गया हुआ था दरअसल. Acha, acha. So I made it today. Good. Yeah. That worked. Yes, sir. That should have given you some points. And it's still going up because now we have an SRE almost coming on 3020. Let's see. If it breaks the previous high, it will start to make a higher high now. It needs to break 5727. When the setup comes, the moment it happens, setup is done, go back. We don't really, we want to recover our losses, which we did. But we were not putting in trade, we were putting in trade. Why? Irritation view. No, not yet. So breakout gave us a point, I think. नहीं वो जो पिछला 1510. अच्छा बोला 2675 या 2778. $250 is there. $33 US is how much Canadian? 33 times 1.53. Yes, I'm just checking the balance. This card has $40, so trying to see which account. जी जी सर. मेरे सेम अकाउंट में ना एक ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है. डिस्कनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें, सही हो जाएगा. सब कुछ हो चुका नहीं यार. रीस्टार्ट कर चुका हूं, एवरीथिंग आई डन. अच्छा, नो प्रॉब्लम. डिस्कनेक्ट करें, राइट क्लिक. The same account. Right click the same account. सिमुलेशन डाटा फीड या सिमुलेशन नहीं अपने
अकाउंट्स के अंदर जाएं, सिम अकाउंट नजर आएगा, अकाउंट्स राइट क्लिक करें उसे, सेम या सेम सिम सिम एक सेकंड, उधर नहीं कनेक्शन में, सिमुलेशन नहीं इधर इसको सिम, इसको राइट, अच्छा या राइट क्लिक, एडिट अकाउंट, reset, okay yes, and press OK. That should fix your issues. एक लाख 40,000 पे लेके आया था every weekend every time I practice on the same data got 240,000 micro 140 महीने डेढ़ every weekend when repeating I'm sitting on जैसे कुछ चीजें बताते हैं जो करना है I am not for next week. Thank you, Rafa bhai. No. There you go. This account has 53.25. Yes. 2 lakhs. Another higher low. Yeah. लेकिन अभी वो सिर्फ एक ही टिक दिया उसने, अभी 30-20 का मैं देख रहा हूँ। हाँ तो मैं 30-20 को ओवरराइड कर रहा हूँ, 30-20 मुझे ज्यादा पावरफुल लग रहा है राइट नाउ। 30-20 के बीच में मतलब बाय वन पे Buy stop above 8.5. 5729.5. Yeah. 792 No, 5729. इसके सारे ना फाइल नीचे चले पुश करेगी ऊपर भी यहाँ पे इसका बना दिया हायर लो तो जानते हो डाटा इंडिकेशन के लिए हम ऊपर जाने वाले हैं जा रहे हैं तो नहीं जाने वो बात है तो बी वेरी क्लियर होगा Tesla recalls most cyber drops. That's what Tesla is called. That setup did work. You were right. Still gave us a point. Setup ठीक चला 15-10 में. Yeah. Oh, more. Can't believe the destination went from S2 to R1 down to S1. Full swing. 19,873. Amazing. One 4-hour candle is red, one is green, now red again. No, we call this a Trump effect. अब ये वैल्यू एरिया के ऊपर बाउंस कर रही है वैल्यू एरिया के ऊपर बाउंस करने का मतलब तीसरी बार आ रही है एक बार रीच किया फिर तीसरी बार अगर अब नीचे गई तो 56 पे रहेगी
फिर देखिए पानी है इधर हम लाइक ठीक है ऐसा ले first 10 ticks are used for. आप at 10th tick में ब्रेक मिल रहा है उसके बाद आज तो मैंने एक भी ऐसा ट्रेड नहीं देखा जहाँ मैं उसमें बैठा था और इधर करके यहाँ पे क्लोज है मिड बैंड टच नहीं होया ना थोड़ी 20 डाइवर्जन होते जाएगी ऐसा मार्केट बढ़ जाती है मार्केट नीचे आती है और मार्केट ऊपर जाती है देखो तो कितने लाख कमा लिया इंडियन करेंसी में एग्जैक्टली यहाँ के हजारों में आ जाती है 2000 कमा लिया डॉलर वहां पे तो 1.5 लाख हो गया बात पॉजिटिव में निकला वो एक बहुत बड़ी बात है अब कल है थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ ब्यूटीफुल फ्राइडे ऑफ द मंथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडेज ऑफ द मंथ टू लूज और टू गेन वो आपके छोड़ देता है दैट्स योर फ्राइडे that means to gain tomorrow is a beautiful Friday and if you really want to make money tomorrow is the day कल है 4 रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स बस रेड है रेड ऑरेंज वो बहुत कुछ रेड कर देता है वो रिटेल सेल्स थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडेज ऑफ द मंथ और आप कहते हो ना कि मेरे को वो क्लियर करना है कितने कमाने हैं 800 900 1500 नहीं इसको क्लियर करने में 1500 नया लिया क्या उड़ा दिया मैंने नहीं उड़ाया फिर कितना उड़ाया किसी ने उड़ाया तो किसी के पास आपके कंट्रोल क्यों है ओके कल 2 माइक्रो या 3 माइक्रो में आपके 1500 बोल सकते हैं ट्रेनिंग में क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रेनिंग क्योंकि थिंग इज थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ द मार्केट विल गो लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस वो जिटरी इफेक्ट जो होता है वो कम होता है लेकिन फ्राइडे को जिस डायरेक्शन में मार्केट ने पकड़ लिया उसी डायरेक्शन में क्लोज होगी अच्छा अगर ऊपर की डायरेक्शन पकड़ी है तो ऊपर ही क्लोज होगी कहाँ ऊपर मिलेगी तो ऊपर के मिड बैंड चल रहे तो ऊपर के मिड बैंड लो और ट्रेड करते हैं नीचे के मिड बैंड चल रहे तो नीचे का करो और ट्रेड करते हैं 2-3 माइक्रो में या 2 माइक्रो में अब 20 का तो होता ही नहीं अच्छा 20 का स्टॉप लॉस है 60 का टेक प्रॉफिट 60 का टेक प्रॉफिट ठीक है ट्रेल और ट्रेल उसका वो 10 11 10 किया हुआ है ठीक है पहले 10 टिक का खतरा होता है 10वें टिक पे ब्रेक इवन आ जाएगा फिर तो नुकसान नहीं होगा फिर तो नुकसान नहीं होगा फिर वो जब आगे चलते रहेगी ना अपने तो आपको फोकस पता है किस चीज पे करना है आपके प्रॉफिट ट्रेल पे नहीं करना हाँ। अगर मार्केट बहुत तेज जा रही है हाँ। आपने फोकस करना है कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है 60 को डाउन 60 से उठा के ऊपर या 60 से उठा के बिल्कुल नीचे अगर नीचे जा रही है तो 60 को उठा के करो 1 माइक्रो में $70 मिलते हैं तो 2 माइक्रो में 140 3 माइक्रो 4 माइक्रो 5 माइक्रो में $350 अगर एक ट्रेड में आपके बन रहे हैं
उसके बाद आपने कंप्यूटर नहीं खोलना नहीं खोलना। क्योंकि 350 बन गए हैं ये। बट बी वेरी केयरफुल, इट्स बी वेरी फास्ट। आप तो ठीक है, in the direction we want benefit. No, it's not the direction that you want, it's the That direction the process. market is in. क्योंकि And you have मिडबैंड to get up. अगर मिडबैंड फेल होता है उसमें तो फिर वो Because पाँच midband fail हो गया हाँ तो उसका पाँच stop है, loss है। हाँ 5 है, 20 का रखना है एक ना। माइक्रो में 20 का stop हाँ loss, उतना ही है। एक डील $40 होगा। यही होगा। हाँ नहीं $20 हो गए। $20 हो गया, हाँ 20 $20 हो गए। हाँ ठीक है। तो 3 भी हुए अगर माइक्रो तो 7 हो गए। अदरवाइज मैं वैसे 16 रखती हूँ तो मेरे को है ना 200 का, तो फिर मैं अपना तो रिस्क ले $250 सकती हूँ। $300 उड़ देता है। हाँ और उसका तो रिस्क मैं ले उड़ते सकती हैं। हूँ। Another mid-band worked, going down and down and down. Just craziness. Even after diversion. राफे भाई ये डाइवर्जन वाला सिस्टम ना हटा ही देते हैं। नहीं, first diversion मैं कह रहा हूँ ठीक है, it's okay. 1 mid-band, 2 mid-band, 3 mid-bands. कल आपका मैसेज देखा था मैंने। What can I say? Just imagine, manual takes 1.5 million and runs it. Eugene will definitely have a heart attack because his $5 million also going to manual. Just imagine. See, I can earn 82 now with no risk. You can earn your this one, but Eugene, he'll be shedding in his pants. No, I'm just joking. Okay, did you trade today? Did you trade today? Everybody does. Everybody. Why didn't you sell them? Why didn't you sell them retail? After 30 years, you're still doing that? After 30 years. You have 2200 just cash out.
Just cash it because the problem with this tariff war and all, tomorrow the markets are going to crash. They're going to come down further. Tomorrow there's another thing. Now, tomorrow is core retail and retail sales. It's third Friday of the month, and the options are also. It's the end of options tomorrow, so they're gonna just dump into them now. See, everything is gonna go down in a way. उसके बाद लोग भी खा रहे हैं It's only retail that is going up. ओपनिंग लॉस हो गया वापस होता है S&P is negative. Nasdaq is negative. So Dow, Nasdaq, everything is. Dow, S&P 500, Nasdaq set to reverse gains after Fed decision. So it's coming down. Everything is down. Alright, so that's okay, but at least it's there. Remember, yeah. Exactly. You don't have any pretty much. Unless figures are pretty much down, which is heavy, and says heavy, can you open this? ये 30-20 का जो SR है बनता नहीं है ना स्विंग रिट्रेस हाँ हाँ अभी SRES बना हुआ है ना, हायर लो है। हायर लो बट वो जो आपने स्विंग रिट्रेस की बात करी ठीक है ना हाँ हाँ तो यहाँ से 5716 प्लस 8.5 5724 यस Okay, Susan, I'm getting a trade. I'm getting a trade. All right. Bye. This is called first pullback. फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं मैंने सर बोलते हैं फर्स्ट पुllback. ना ना फर्स्ट पुल बैक होता है, हायर हाई से प्राइस हायर लो पे आती है तो वो फर्स्ट पुल बैक होता है। जिसे मिड बैंड बोलते हैं. मिड बैंड जिसे हम पहला मिड बैंड सबसे पावरफुल होता है। वो कौन सा होता है SRES के बाद पहला मिड बैंड आया, और ये 9:30 के टाइम पे जब आता है अच्छा बट SR पहला मिड तो बैंड। मतलब इस SRE के बाद अगर आता है तो हाँ ये ब्रेकअप होगा ना चेंज होगा डेफिनेटली एक बात या सेल स्टॉप कर देते हैं. हाँ वो अगर ब्रेकआउट हुआ तो तो 40 हरा हो गया नहीं मना पड़ता नहीं तो अब 40 अब सुबह हरा अच्छा हो मैं गया। ना वहाँ 18 बना हुआ ना 30 मिनट्स में खुश हो गए, वो हरा हो गया। जी जी सेल सेल स्टॉप. आपको पता लाइट कलर क्यों होता है मुझे डार्क लगता है राफे भाई 240 में हायर हाई इसने बनाया है और अपने मिड बैंड को टच करके काइंड ऑफ बाउंस कर रही है।
हायर हाई बना के या वैल्यू एरिया को 240 के टच किया और वापस नहीं राइट नाउ यस इन द मिडल It's trying to go back up. go back up. So it should go and break 5770. Hmm. 5799 पे एमओ पहले रेजिस्टेंस पे है। बहुत सारा ये तो 5770 को ब्रेक करके हाँ 5799 फिर 5824 गिरते हुए देखो रेजिस्टेंस मिल गई थी और टम्बल डाउन हो जाता है ना। Humpty Dumpty sat हाँ around. एग्जैक्टली। मतलब सर अनएक्सपेक्टेड हाइट जाना चाहिए यार। मैं तो कह रहा हूँ वैल्यू एरिया के अंदर फिर घुस रही है ये ठीक चलिए अंदर चलिए let's see how another mid band okay yes sir but that wasn't a true mid band because it came from higher low. फिर भी काम तो कर रहे हैं ना और कहते हैं ना it doesn't matter where you're coming from it is exactly where you're going Yes. so you वो एग्जांपल हो गया बाकी ऊपर 575.5 break Because 1 o'clock candle is green, 60 minutes, so it should shoot up. Let's see. कितनी वेरिएशंस है हर if you look at 1510 you're looking at a different set looking at 3020 ये मिड बैंड went up और देखते हो हायर लो क्या आज यहाँ से लिया होता तो ऊपर तक चली जाती बड़ी बैंड को अजीब से अगर ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन में हायर लो बनाया ग्रीन बैकग्राउंड में 3020 में अगर वो हायर लो बनाया हाँ घूमने और अगर मैजेंटा बैकग्राउंड में लोअर हाई बना हाँ घूमते So that means overall SRE बहुत ज़्यादा points दिखता है। बहुत है Normally S3 तो देखा सकते हैं last week 30-35 points plus. Wall Street bonds are starting to trade down. So you think gold is going to go up now चल all time high पे बैठा भाईजान वो तो है लेकिन अब ऊपर जाएगा और 3043 3039
9.5. Let's see if it gives me a point more. 10.5. 10. 2 more ticks and trade is done. Okay, another SRES passed. Yes, अब account is running. You have recovered everything that you lost, and you are positive. So 25,000 plus. Okay. So those are the अब बंद कर दो. Now is the time we close it. वापस देखिए. Look at अच्छा. बंद कर. मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन. बाद में क्लोजिंग है. ये सुबह के 8:30 बजे मैं करता हूँ. अगर लॉस नहीं, it's not. No, don't think about that. If you want to continue trading, think about I need 5 points. Look at the points. 2 points, 4 points. Don't look for $19. When you go hunting for points, money is. Again, SRES pass up, mid bands to the upside will start working now. Okay. So Look, this is the concept that's of- your first pullback. Yes. 15, 10, that's your first pullback. It done. हो गया है, आके चला गया. आपके breakouts भी चलने शुरू हो गए. Please, you have this. More. Look at breakouts are done. This- ठीक है. You will see ये added आपके PNL. तो risk आपका कम है. आपको ये added हो गया ना. मैं भी इसमें जा रहा हूँ. I know I can still make money. मेरे को भी हो रहा है कुछ. But नहीं. वो तो सुबह 9 बजे भी हुआ था ये सारे. तब क्यों नहीं है? हाँ. अब जब आ गया ना तो रुक जाओ. Be patient. It's okay. There's always another day. There's always another trade. अभी देखो मेरा मंडे को मैंने किया था. मंडे का रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया. ट्यूसडे वेडनेसडे आते थे. थोड़ा लेके मैं वापस आया. आप भी थोड़ा लेके वापस आया. So, हर रोज ऐड करते रहोगे ना हो जाएगा. ज़्यादा बनाने के चक्कर में देख ही नहीं जाना. अच्छा सुबह your first 3 trades you've made 150 250 300 हर ट्रेड में अगर बन गया you reach like $500-600. Don't pay off because your questions play tricks on you. 600 बन गए 800 बन गए 600 500 बन गए तो बंद ही करो. ओ भाई नहीं करते लोग दे के जाते हैं. बहुत सारे. आज ये गलती हो गई. 2 फुल लॉट लग गए गलती से. फुल यस. थैंक यू. नहीं यस. अच्छा वो जो स्विच करना होता है. यस.
मैंने कहा शाम को किया था, लकीली 0 पे बंद कर दिया। सर वो उसमें उड़ा दे उसको देख भाई, गलती होती है, गलती से पैसा लूज हो जाएगा। हाँ, that doesn't. That's okay, it's a human error, you know, human. पर जानबूझ के गलती करना, see, for you to gain back your money because of an error of judgment is okay. वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलिए हमसे ये गलती हो गई, लेकिन ट्रेड अगर करना चाह रहे और राफी भाई ने मेरे 3-4 हफ्ते पहले ना एक बात बोली थी, it's easier to gain back your stop loss as compared to your money. अगर आपका स्टॉप लॉस लगा, आप क्या बोलते हो स्टॉप लॉस लगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं है और आपने $200 माइनस क्लोज किया है, आप बताइए क्या बोलोगे, यार मेरे $200 निकले। और जब आप बोलोगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस गेन बैक नहीं हुआ, $200 गेन बैक नहीं हुआ, देखे जाता कितने ने आज देने सब तो हो जाएगी, बात कर रहे चलेगा। कल माइक्रो की गेम है सारा दिन। Thank you, sir. ठीक है जी। ओके Okay, sir. I see. Okay. Thank you. एक माइक्रो में खेल रहा है, कबड्डी 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 literally is playing with micro। 25 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, चल पड़ेगा, इंसान तो नहीं हुआ ना, ट्रेडिंग फीस तो कोई कर ले, तुम्हें मजा आता है, डर नहीं लगता। एमबीएस की सबसे खूबसूरती ये है कि यू प्रेशर नहीं रहता आपके ऊपर। लेकिन ईए में तो प्रेशर है ना 30 दिन का, तो इसमें प्रेशर भी तो है 30 दिन का बनाने का, सही बात है। और एक दो अगर एक स्टॉप लॉस हो तो स्टॉप लॉस बोला मैंने, हाँ। स्टॉप लॉस मेरे 4 दिन वेस्ट हो गए मेरे ईए में। सर एक्सपेक्टेड हाई चल रहे हैं यार। कल मेरे कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड आए तो मैं पूरा अकाउंट पास करूंगा, लेकिन 200 तक बाहर आ गया यार, मैंने समझ नहीं आ शर्म रहा। आ रही है बहुत। नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे सुबह आके मैंने आपसे कहना था कि ठीक है जी, कंग्रेचुलेशन, जिस स्पीड से वो गिरी है 70 से 29 तक आई है। सर लिटरली सर सब कुछ ग्रीन सीखा मैं कि यार। हाँ, तो एरिया में तो आपने ऑपोजिट जाना होता है। या और S3 R3 आया, मैं कहता एक्सट्रीम से ना पहुंच गए। ये आप तो वैसे ही अपना अकाउंट रिस्क पे लगा के बैठे हुए थे ना। रिस्क को सिक्योर करना है तो फिर आगे बंद करनी पड़ती है। एक बात है, ट्रेडिंग दिलेरी चाहिए थोड़ी सी ना, टर्न के नहीं खेल सकते थोड़ी आप, सी हिम्मत चाहिए। थोड़ी सी सर हो। अकाउंट्स उड़ाए नहीं ना, डर बंद नहीं करते। अभी तो रियल मनी नहीं है आपका, एक अकाउंट 1500 के रियल चले जाते हैं, कभी आप ट्रेडिंग ना करते। ये तो अभी आप सीख रहे हैं फंडेड अकाउंट्स में। फंडेड अकाउंट में आपको हिम्मत नहीं आ रही, अपना पैसा डालते तो क्या होता है। आप अगेन एवरीबॉडी, मैं ये देखता हूँ 4 क्लासेस करते हैं, 1 वीक करते हैं, मैं रेडी हो गया हूँ जी ट्रेडिंग के। मैं 1 महीने बाद भी नहीं रेडी। एक बात नहीं, ये 3 माह से पहले नहीं हमें लाइव देते थे, 3 माह से देखें, सेकंड पुल बैक हो गया, मिड बैंड चल गया। नो प्रॉब्लम, 40 का मतलब $400 है। तो प्रॉब्लम है कि वो 1 वीक में होता है जी, मुझे अकाउंट दे दें जी, फिर 1 जाता है, 2 जाता है, 5 जाते हैं, 8 जाते हैं। 3 माह आपको चाहिए होते हैं लेक्चर्स के बाद समझने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग। और आप 7th डे होता है कि जी मुझे आ गया, उस वक्त मिड बैंड होता है, फिर बाकी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 क्लासेस में आपको एक सिखाया जाता है, मिड बैंड मिड बैंड मिड बैंड, लेकिन इट्स ओके। मिड बैंड S2 मेरी बात मेरे S2 के टॉप पे लगा, वो आई उसने S2 को टॉप किया, हाँ। थोड़ा सा ऊपर गई, ब्रीच हुई, आप देख रहे हो कि ऊपर गई। देखिए, मैंने आपको इतनी दफा कहा हुआ है SRE सेटअप के बाद मिड बैंड लेने हैं, जो हायर हाई से इधर भी SRE पूरा हो जाए, इधर भी हो जाए, फिर गारंटी ज्यादा है ना।
अभी SRE सेटअप बना, हायर हाई दोनों पे लगा, आपके दोनों मिड बैंड पास हो गए। तो जब मिडिल में जा रहा होता है ना, प्रोबेबिलिटी देखें, लोअर हाई वाला मिड बैंड भी चल सकता है, हायर लो वाला मिड बैंड भी चल सकता है, लेकिन will it work? No, but the highest best is 30-20 is giving you the right setup to go up or down, and then you have the highest probability. Right now, what happened? आपका SRE चला, दो मिड बैंड बैक टू बैक चल गए, तो ये क्यों चले? क्योंकि उधर SRE कंफर्म हो चुका है कि मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, राइट? सो अच्छा मेरा ग्राफ से पीछे नहीं जाता बहुत। खोलो तो सही, कहाँ पीछे नहीं जाता? नहीं वो दूसरा वाला बताऊंगी। टेक्निकली जो भी 2 months 3 months की ट्रेनिंग से पहले आता है, वो फिर थोड़ा सा लकी रह जाता है। अभी तो R2 है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल नीचे आए। अच्छा हम चाहते हैं कि नीचे आए, ओके। नीचे आके बाउंस करके ऊपर जाएगी ना। अगर नीचे आ रही होगी तो तुम नीचे से लॉन्ग कर दूंगी। बट माइक्रो में करूंगी। माइक्रो 1 माइक्रो 40 टिक्स 40 टिक्स का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन 20 टिक का वो रखना। जब 20 टिक पे जब वो आएगी ना, 20 पॉजिटिव पे आएगी तो ब्रेक इवन में आएगा। ठीक है। अच्छा, और वही 10 11 10 का रखना। एरिया ट्रेड किया ना आपने, टिक पे जैसी आएगी ना तो एरिया ट्रेड के साथ फिर मिड बैंड तो नहीं मिक्स करना ना, वो तो 400 दफा ऊपर और नीचे होगा। जो एरिया जिसने R2 देखा आपने, वो नहीं केयर करा मिड बैंड क्या कलर है। सो infinite. Take profit always infinite. Do not say zero. और उसने आपने दूसरा वर्ड क्या बोला था पीछे वाला 20 ब्रेक इवन कितने में 20 पे ब्रेक इवन 20 पे था ना। हाँ, जो 10 पे रखते हैं हम। हाँ, और उसके बाद था 11 and 10। तो जैसे 20 होगा, ठीक मैं समझ गया। 20 टिक पे नीचे से मार्केट चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ देखो समझे क्या होगा। जी। अब आपने जैसी 20वें टिक पे आई तो वो तो 40 नीचे है ना। हाँ 40 नीचे। ये आपका ऑर्डर है। ये 20वां टिक हुआ, 20th टिक। ठीक है। जैसे 20th टिक हुआ, 21st टिक हुआ, ये एक टिक ऊपर चली जाएगी और ब्रेक इवन में नहीं आई। अभी ब्रेक इवन में नहीं आई। जब 40 टिक पे पहुंचेगी तो यहाँ से उठ के सीधा ब्रेक इवन पे आ जाएगी। नहीं हमने ब्रेक इवन 20 का रखा है। तो हाँ, तो सॉरी 40 का तो हमने स्टॉप लॉस रखा है। हाँ, ओके 40 का स्टॉप लॉस रखा है। हाँ ब्रेक इवन 20 का। ब्रेक इवन 20 का है, तो जैसे ही 20 तक ऊपर जाएगी तो ये उठ के 0 पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। और फिर आपने रखा है 11 और 10, तो फिर 10 पीछे फिर वो ये आपकी कैंडल्स हैं। हाँ तो वो नीचे नीचे जाता रहेगा। ये ठीक है। हाँ वो 10 के नीचे मिलता है। माइक्रो में करते रहो। एक माइक्रो 11 10 है कि 10 11 11 10 होता है ना। 10 11 10 नहीं, ब्रेक इवन जो है वो 20 है ना। हाँ तो 20 11 10 बहुत बहुत तो मिटा दो। हाँ नहीं, it's all done for today anyway. पीछे निकल गया। अरे नहीं एक था ना ऐसा ही जब मैं एक पॉइंट लेके निकल गया और इतने लेके गए थे। मैं अगला ऐसा री भी ना माइक्रो में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा जाता है, हम एक पॉइंट लेके बाहर आ जाते हैं। तो बड़े में लेके जाओ ना बाहर। ये देखो ना, you can't mentally comprehend कि you can make that much money. That's the problem. आप comprehend नहीं कर पा रहे। आपको पता है जब मैंने तो खुला फंड छोड़ा हुआ है, इनफाइनाइट, ठीक है, बट आपका माइक्रो में मेरा अकाउंट वो था, मैं 2 दिन में लेकर आया हूँ ऊपर। अच्छा एरिया से ना नहीं, सब कुछ कर रहा हूँ। So what I did was सर डाल दे रही $20 $30 $40 जो मेरा ब्रेक है वो जब वो 40 क्रॉस कर जाता है ना, और फिर मैं देखना शुरू कर देता हूँ 55 60 70 80, जैसे ही 90 देख लेता हूँ ना मैं, मेरा स्टॉप लॉस तो पीछे में, उसे बीच में ले आता हूँ क्योंकि तो मैक्सिमम ये कैंडल के बीच में। हाँ, जैसे ही वो 100 होता है मैं ऊपर करके बंद कर देता हूँ। तो $100 तो मेरे को 2 माइक्रो से मिल ही जाते हैं।
एक स्विंग में। सीरियसली मैंने मंडे को एक अकाउंट खोला था। तो आप ये जो कर रहे हो ये आप मतलब मिड बैंड से कर रहे हो ऐसा? मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार, ये नहीं हो सकता। मिड यार बैंड। ना ही करो, बॉटम ऑफ द बार में कभी भी ढंग से नहीं हुआ। मैं जब भी करती हूँ वो इसके ऑपोजिट लिए जाता है, एक्सपर्टीज बहुत चाहिए। वो नहीं मुझसे होता ना। मैंने अभी कोशिश करी है। और एसआरई तो अच्छे बनते हैं, लेकिन द फैक्ट स्टिल रिमेन। देखो जब मैं देखता हूँ ना -$20 लॉस, मेरे को दुख नहीं होता, ना, वो तो है। पर जब -200 देखता हूँ ना तो मेरे को दर्द होती है। सर मेरे को 1.5 महीना लगा अपना पैनिक खत्म कल करने में। ओसीओ ऑर्डर लगा था, एक माइक्रो दे नाल, एक ऊपर था तो एक थल्ले था, पीपी था। हैं? सर कल तो बड़ी न्यूज़ है कि छोटी है? अब तो बड़ी है। CPI नॉन फॉर्म होगा। हाँ, लेकिन कल ये है कहते हैं सब। कल है कोर रिटेल 8:30 बजे एंड रिटेल, दोनों रेड है लेकिन। और कोर रिटेल और रिटेल है। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट है बट रेड। नाले फ्राइडे है ना। किसने जाके देखो 8:30 बजे। बड़ा इम्पैक्ट होगा फ्राइडे का। तो इसका अगर ग्रीन आता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ग्रीन में रिजल्ट आता है पॉसिबल। तो मार्केट का ऊपर जाना होता है ना। अगर रेड में आता तो ऊपर होता नहीं, पर आप मैं कल एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ है ना। ਮੈਨੂੰ ਓਸੀਓ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਏਰੀਆ ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਏਰੀਆ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। आई होप सिंपल नहीं है। एक दफा कॉन्फिडेंस शेक हो जाए वो मैंने तो शाम को सोचा कि मैं ट्रेड करती हूँ। हाँ जी, मैं शाम को सोचा मैं ट्रेड करती हूँ, थोड़ा देखती हूँ क्या है क्या नहीं। तो मैं ट्रेड में बैठे शाम को मुझे कुछ बूस्ट चाहिए। मैंने उसके बाद ही उसका बूस्ट ज्यादा ही मिल गया। मैं कहा चलो एटलीस्ट तो मेरा दिमाग हटाया था थोड़ा सा, वो उसने सब कुछ उड़ा ही दिया। मेरे को पता चला नहीं। कितनी उड़ा दी थी? मतलब फाइन नहीं ज्यादा नहीं है, बट तब भी उसका कुछ असर नहीं हुआ। नहीं तो मैं यूजली थोड़ा खत्म हो जाता है, वो भी असर खत्म हो गया जस्ट बिकॉज ग्राफ खुले उसने वो भी उड़ा दिया। नहीं मेरा मतलब वो उड़ा दिया। ओके सर, ठीक है भाई। ओके। फिर स्कॉच या नहीं वोडका? अरे यार वो नहीं, वॉट यूजली वॉडका मोस्ट ऑफ द टाइम। स्कॉच नहीं। हां जो स्कॉच तो छोड़ दी। वॉडका में क्या होता है, रजनी जूस से कुछ डाल के पी जाते हैं ना। वो ही इज 5% का है, आई एम 40%। ये लीजिए आप। थैंक यू। आप जाओगे ना, मैंने एक ऐसा रिट्रेड लेना $400 बनाने, मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। आप ड्राइव नहीं कर पाओगे घर तक। अरे क्यों नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं, आप भेजें। ये देखें ये आपके इसमें कलर्स क्यों फर्क आते हैं? देखो आपको कलर फर्क है, ये देखो मुझे फर्क है, ये मेरा कलर ही नहीं ये खुद से डिजाइन है, स्पेशल है। कलरफुल है आपका यहाँ का। ऐसे किसकी बात कर रहे हैं? ये वाली? हाँ देखो मेरा नहीं है मस्टर्ड कलर नहीं है। चलो जी, आई एम आल्सो लीविंग। ओके, आई एम वेटिंग फॉर माय ड्राइव। मैं सब घर से करूँगी, मैं आ जाती हूँ। मर्जी है। नहीं मैं आ जाती हूँ। घर में पैसे कमाने हैं या बाहर कमाने हैं? पैसे कमाने में जब सड़क पर बैठ के कमाने पैसे कमाने में माइक कंप्यूटर खोलने की जगह पे आ रहा है। घर से बचेंगे हम। घर से नहीं करो, यहाँ पर आके करो, क्योंकि tomorrow the market will be very very unpredictable. अच्छा ठीक। तो maybe
मैंने पता पिछले 2 फ्राइडे से क्या सोचा हूँ, मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूँगी, एक्चुअली सर बोलते हैं फ्राइडे को ट्रेडिंग तो करना मैं नहीं करूँगी। समझ पाओ पर उंगली तो चलेगी मैं खोलती नहीं कंप्यूटर, खुल गया कंप्यूटर तो फिर माउस भी ऑन हो जाता है ना टेक्निकली। खुद ही होगा मैं रात के 2 बजे उठ के देख रहा था कोई ट्रेड आया नहीं आया नहीं इतना नहीं, तो सुबह घोड़े बेच के सोती मैं। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी अम्मा कहते यार वो ट्रेड है नहीं तो अगर करना है तो यहाँ पर ही करूँगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना। ट्रेड करना तो यहाँ करो घर से मेरे मैं भी जितने ट्रेड डाल दूंगा पुट्ठे पड़ते आज तो वो नहीं आ रही 3 बजे हाँ, 2 बजे वो जीजा साल है वो जीजा साहब को अच्छा तभी हमेशा इकट्ठे आते हैं। हाँ तो जीजा रहते भी घर के आसपास जीजा जी वो हैं जो बड़े वाले हैं। हाँ नहीं वो साला है जो बड़े वाले जो पटवा देके आते हैं। अमन हाँ अमन की वाइफ कुलदीप है। उनकी अमन की वाइफ कुलदीप की छोटी बहन है अच्छा All right, guys. ओके See you guys tomorrow. Time to Sure. break. तो वही हो गया पैसे जितने बना रहे थे बना लिए नहीं नहीं, अगर आप माजिद भाई बैठे हैं, अगर बैठ